floor to you. I cede the floor to you. Delegates, you are requested to turn on your cameras. Sir, you are muted, I think, if you are speaking. Thank you so much for inviting me to this program, e-AIMUN. It's always a pleasure and a privilege interacting with the students of this esteemed institution called uh, Amity Group. And the topic we are discussing here is a very contentious one, and it is an issue which ignites a fierce debate, which is considered by many to be divisive, and hence it is their argument that it should not be deliberated upon, or even if it is deliberated upon, it should not be converted into a fundamental right, or it should not be implemented. Now, the Uniform Civil Code, if you remember, was is enshrined in the Indian Constitution as part of the directive principles of state policy. Now, these directive principles, as you know, they are not enforceable in the court of law, and they are not justiciable. They are a guiding principle, and which means that any government in the future could consider implementing it by enacting a law. Now, it is, as I said, is enshrined in Article 44 of the Indian Constitution, and the exact wording, if you allow me to read it out, the Article 44 of the Indian Constitution stipulates that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Now, issue was deliberated upon in the Constituent Assembly, and it was put forward as part of a debate by a senior Congress member of the Constituent Assembly. He was a member from Mumbai, Mr. Meenu Masani. And it immediately received endorsement from several members of the Constituent Assembly, including Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of the drafting committee, the president of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, who later on went on to become the first president of India, and Rajkumari, Amrit Kaur, people like eminent luminaries like K.M. Munshi, Aladi Krishnaswamy Iyer, even Nehru, the first prime minister of India, supported the proposal. But it was after a lot of deliberation, because there were a lot of members of the Constituent Assembly who were against it, who saw it as a violation of the fundamental rights of the citizens. So it was thought at that point of time that it would be prudent to include it among the directive principles of state policy. Now, it is rooted in the Constitution, in the statute book, and even the judiciary from time to time has been advocating the implementation of Uniform Civil Code. As late as I would recall the famous Shah Banu case, where the Supreme Court had advocated the implementation of Uniform Civil Code. And as late as 2010, in the Jose Paulo Coutinho versus Maria Luisa Valentina Pereira case, the Supreme Court had again endorsed the idea of having a uniform civil code. So the judiciary, our constitution, and even the law commission in its latest meeting, which was held in June 14, 2023, the 22nd Law Commission, which is in force now, had requested citizens and recognized representatives of
recognized religious organizations to give their opinion on the Uniform Civil Code. And he had asked them to give their opinion within a month. And soon after, Honorable Prime Minister of India, while speaking to party workers at a conference in Bhopal in June, he too said that time had come to take a fresh look at the Uniform Civil Code. So his speech and his endorsement or to BJP workers at a conference in Bhopal was seen by many as an endorsement of the law, and that the government at the center would soon bring out a law implementing Uniform Civil Code. But that hasn't been done. I think Honorable Prime Minister wanted to trigger a debate, and a debate is always welcome. Now, as you remember, this has been going on for quite some time. It has been enshrined in the Indian Constitution. So, what are the factors which and I would like to add at this juncture that many states, in states like Goa, which has a very diverse population, they already have a uniform civil code. And states such as Gujarat and Uttarakhand, they have also said they have set up drafting committees to look into the possibility of enacting a law, the Uniform Civil Code. And India has been, from time to time, enacting laws which foster gender equality. And the biggest argument in favor of implementing Uniform Civil Code is that it would promote gender equality. There are many states and which have laws which are considered retrograde, which are considered regressive. I would only ask you to look at a law in Jammu and Kashmir, which said that any Kashmiri woman who married outside the state would be denied a right to have a stake in properties in the ancestral properties in the state. Now, this law, which you would agree was a very retrograde and a regressive law, was done away with by the government, and women in Jammu Kashmir can have a claim on property without having to undergo the risk of foregoing it. So many states and in India, from time to time, has been implementing laws which have been considered to be very retrograde and regressive, backward looking. Now, what are these? You must remember that we already have a Indian Penal Code, a common criminal code, and we have several statutes, such as which we already have that several statutes, such as the Transfer of Property Act, which in a way advocate a uniform civil code. But these codes, they specifically pertain to 4 areas: marriage, divorce, inheritance, and adoption. So, as I said, large part of law containing crime, pertaining to crime, pertaining to civil matters, such as the contract law, transfer of, they already are in force. But specifically to laws pertaining to these 4 areas, personal laws still are in force. And many would argue that in order to promote gender equality and promote greater integration among the people of India, a uniform civil code is a must. There are those who say there are other arguments too in favor of having a uniform civil code. One is that, of course, it would promote gender equality, national unity and integration, and it would foster true secularism in the true sense of the term. It would also protect individual rights, modernize the legal system, and harmonize our diverse traditions.
Now, but at the time of debate within the Constituent Assembly, there were several who said that it would come in the way of personal laws, which it also said that they also argued that it would be seen as a violation of fundamental rights, and a country as complex and delicate as India would need several personal laws, would mean that adherence to separate religious groups or religions, they would have their own laws. So a diverse country, their argument is that like India cannot have a uniform civil code. But as I said, there are several areas where we already have common laws. And let me tell you that when you talk of a uniform civil code, it does not mean that we are, we aim to have a homogeneous society which has a common culture. No, that is not the case. It would protect the right of individuals to have certain, for instance, women. Now in Goa, as late as in December 22, 2016, there was a law which was considered to be very archaic. It was part of the Portuguese Civil Code, and it was done away with. And all the members of a particular community which practiced polygamy, the Uniform Civil Code, which is implemented in Goa, it bans polygamy, which means that those who practice polygamy cannot practice it if they were born within the territory of Goa. So many states already have it, but the argument against uniform civil code at the central level, at the national level, is very complex. And as I said, uh, we still have to wait for some time before the country draws a consensus, evolves a consensus, hammers a consensus on the Uniform Civil Code. The BJP, the party which I represent, strongly advocates a Uniform Civil Code. It has formed part of our manifesto. But then I said a consensus would mean that all parties, all groups would have to agree to have a uniform civil code. Our party does not want to unilaterally impose this on the citizens of the country. There has to be broader debate, a fierce debate, and a well-argued, educated, articulated debate, which would always be welcome. Only then I think the country would be prepared to have a uniform civil code. Thank you so much. Thank you, sir, for your enlightening words. I would like to open the floor to delegates if they want to ask questions to sir. Uh, if not, at the end, I want to ask a couple of questions to sir. Sure, please go ahead. Any delegates who want to ask a question to sir, kindly raise your hands. Um, Saying only one, Amit Shah, Amit Shah followed by Mamta Banerjee. So, sir, can I ask a question now? Yeah, please. Sir, so my question is that why did the BJP pick up this agenda so late? They could have picked this up when they got elected in 2014 right away. They could have No, implemented it just then. Why did they why are they talking about it in 2023? see, as I said, it has formed part of our manifesto right from the days of the Johnson. It's not that we are, we have come out with the proposal right now. It has formed a part of our manifesto. But you would agree, as I said, we would want to have a consensus. Article 370, many people were arguing, and they had always argued that it cannot be done away with. We were always supporting it, and we always maintained that there would come a time. Everything has a time. You cannot bring out a law or promulgate a law in a very whimsical manner.
Everything has a time at the right moment. So we are waiting for the right moment. As I said before that, we would like to have a broader consensus. Even the judiciary, the Supreme Court, as I said, from time to time has endorsed the idea. The Constituent Assembly deliberated upon it, and people like Nehru, people like Dr. Bhim Sahib Ambedkar, the father of our Indian Constitution, Dr. Rajendra Prasad, they all supported the idea. These were all educated, learned men. So it's part of our constitution. The Constituent Assembly deliberated upon it. The Supreme Court from time to time has endorsed the idea. So we only want to have a broader consensus before going in for the Uniform Civil Code. Thank you, sir. Mamta Banerjee, you may ask your question. यस सर, एक बार को जैसे यूसीसी सही भी होगा, बट वो उसका बीजेपी उसका व्हाइट पेपर कब निकालेगी? बिकॉज पीपल जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक यूसीसी का एक व्हाइट पेपर नहीं आएगा दैट व्हाइट पेपर की आवश्यकता नहीं है। लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली, इसके कई सारे रिपोर्ट निकले हुए हैं। आपसे आग्रह हुआ कि उनको पढ़ लें, और इस पे इतनी चर्चा हुई है। मैंने कहा कि दिल्ली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स आप अगर उसको पढ़ेंगे, उसमें चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट्स हैं शाहबानो केस में और अन्य कई सारे केसेस में, उनको आप पढ़ लें। लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स हैं, तो कई सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी हैं। इसमें व्हाइट पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो एक आम राय की, सभी लोगों को हम साथ लेके चलें। इसलिए हम सबको कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो, तभी। इसीलिए हम सबका विश्वास जीत लें, तब हम इसको लेके आएंगे और जरूर लेके आएंगे। बट इस पे कई सारे कागजात, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। Rahul Gandhi, you may ask your question. This will be the last question we'll be taking since there's a paucity of time. Yeah. Good afternoon, sir. Pranam. मेरा सवाल आपसे ये है that you just stated that there are a lot of law commission reports out there which we could study. And sir, my question basically is that the 21st Law Commission had sent a report stating that the UCC is absolutely unnecessary and undesirable at this point of time. And sir, like while researching, when I tried to find that report, it was removed from the official website of the Law Commission, and it is somewhere in the archives of the PIB. So sir, what is exactly the stance? Like if the Law Commission or B.S. Chauhan, Justice B.S. Chauhan has stated this after a full public opinion, then why is it being reiterated again and again? No, because it's part of a constitution. We are all guided by the constitution, Indian constitution. Na? Indian constitution is the guiding principle. It is true that it is part of the directive principles of state policy. It means that in the future, there would come a time when the country would enact a law. The constitution says this: judiciary, the Supreme Court, the supreme judicial authority in the country, has from time to time advocated it. There are several judges, Justice Deepak Mishra. You remember the famous Shah Bano case. What was the judgment in that case? So you're talking of one Law Commission report, but the latest Law Commission report, 23rd Law Commission report, it advocated a uniform civil code, and it invited suggestions from various individuals and religious groups. So it's not that one, I can't talk about, I haven't seen the B.S. Chauhan led Law Commission report, but there are several other reports which have advocated the idea. And also you must remember, part of the constitution, the Constituent Assembly, people such as Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of the drafting committee, Dr. Rajendra Prasad, who was the president of the Constitution, they all supported. I would suggest you go through the papers of the Constituent Assembly and you would analyze. Even Pandit Nehru, he supported the idea because he thought that this would be a great way to foster gender equality. And that is why the India government did away with triple talaq, which was a pernicious practice, which was retrograde and which was anti-women. So judiciary, the statutes, they all have advocated a uniform civil code.
Thank you, sir. If I may, I also want to ask a couple of questions. Please. Firstly, sir, it's an honor to interact with you. I was present for the last 2 years as well, and was able to Thank you. listen to you. Sir, my first question is not entirely related to the agenda, but an issue which has, people have forgotten. What is the BJP's stance upon bringing back the three farm laws which were, taken back during the UP elections? Now, Because this is not something which is germane to the topic we are discussing, but I can answer your question. The BJP-led government at the center, thought it prudent to bring forward these three formulas, which they thought would go a great distance in promoting the interests of the farmers and in bringing, our stated goal is that we aim to double the income of the farmers we wanted to get it done by 2024. But that has not been done till now. We are still in the process. And if the three farm laws had been implemented, we could have covered a great distance in this direction. So there was a lot of opposition resistance to it, as you know. It has been widely reported also, and the government of the day thought it prudent to, revoke the three laws because there was a lot of opposition. So it doesn't mean that we have put this on the back burner for all times to come. It only means that we would like to have a broader consensus, and I'm sure the kind of crisis the farmers are facing in Punjab, where water levels are going down, and because of the great use of large use of insecticides and pesticides, the soil fertility too has been going down. So there would come a time when farmers would see justice in the three, agricultural laws, and they would agree to its implementation. But I think we still have to wait for some time before a consensus is evolved. thank you, sir. And another question: what, according to you, will be the timeline during which the Uniform Civil Code can be brought in? Like, will it be during the next term, or will it be after 2029? We can't speculate upon that, but it is something which we want to do as soon as possible. And I'm sure because elections are around the corner, Lok Sabha elections are around the corner. We already are in the middle of elections in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana, Rajasthan, and Mizoram. So let the new government be formed, and I think Mr. Narendra Modi, who is set to become the Prime Minister for the third consecutive term, would, I'm sure, because he had told the BJP workers in Bhopal in June this year that the time had come to implement Uniform Civil Code. And I'm sure it is something which is agitating his mind. And I'm sure he would look for an opportunity to bring out this law as soon as possible. Members, please acknowledge the presence of our chairperson, Mrs. Amita Chauhan, ma'am. Namaste, Honorable Chairperson. It's always a pleasure to interact with you, to have you in audience. आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है, आपका स्नेह मिलता रहता है, और मैं बड़ा कृतज्ञ रहता हूँ। देवेश जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बुलाने पर, आप इनविटेशन पे आप हमेशा आते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं और बताते हैं व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, एंड यू गिव योर सजेशंस एंड यू गाइड देम। तो इट्स हमें बहुत खुशी है, बहुत हमें कहते हैं अच्छा लग रहा है। और जब भी ज्योति बताती है ना कि देवेश जी आ रहे हैं, तो वो वीरा के हस्बैंड है, बड़ा अच्छा लगता है आपके आने पर। नहीं, मैं तो आपके परिवार से, जो आपका जो परिवार है, मैं अमिटी परिवार की बात कर रहा हूँ। मेरा जुड़ाव बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से रहा है। मुझे याद है कि श्रद्धेय अरुण जेटली जी के यहाँ हम लोग मिला करते थे। अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम लोग मिलते थे, और आपका मार्गदर्शन हम लोग को हमेशा मिलते रहता था, और मुझे बड़ी खुशी होती थी। और
मैं तो अब एक लॉ मेकर हूँ, पहले पत्रकार था, हाँ अब जी, एक लॉ मेकर है, और लॉ मेकर के नाते मैं तो मौके ढूंढते रहता हूँ कि कब जो ये यंग ब्रिलियंट माइंड्स हैं हाँ उनसे हमारा मुलाकात हो। हम हाँ वर्चुअल माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन फिजिकली भी मिलेगा मौका, मुझे विश्वास है। हाँ। नहीं नहीं, हम नेक्स्ट ईयर 2024 में हम कहते हैं फिजिकली करेंगे, तो आपको आना ही पड़ेगा। एकदम आएंगे, हाँ हाँ, एकदम, नहीं नहीं, बहुत बहुत एकदम धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सो तो मच। हमारे परिवार के हैं। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Um, sir, will you be open to taking a couple of more questions, or should we एकदम look at? एकदम, आई कैन टेक मोर क्वेश्चंस, नो इश्यूज। Okay, Mr. Akhilesh Yadav wanted to ask a question. If anyone else also wants to ask a question, you may raise your hand. We'll take two questions and then we'll end the session. All right. Is that okay, sir? या दैट्स परफेक्ट। Yeah. So Akhilesh Yadav followed by Naveen Patna. गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते। सो मुझे आप नमस्ते। सर, जैसे आपने अभी बताया कि आपकी पार्टी बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। सर बट आजकल तो ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर जो अमीर है वो अमीर होए जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होए जा रहा है। तो सर मेरे हिसाब से जो आपकी ये लाइन है सबका साथ सबका विकास, वो मतलब अब आजकल थोड़ी इररिलेवेंट बन रही है। तो सर आप इस पे कुछ कहना नहीं, चाहेंगे? ये एक देखिए, मैं जब कोरोना हुआ तो आपका ध्यान उस समय की ओर ले जाना चाहूंगा। जब कोरोना हुआ, देश में यातायात बंद हो गई, लोग एक कोने से दूसरे कोने नहीं जा सकते थे, और लोगों के पेट पे जब लगने लगा कि अ, अ, कई तरह के प्रश्न कुछ उठने लगे थे, तब सरकार ने क्या किया? सरकार ने पूरे जो अपने राशन के भंडार वो खोल दिए, और मुफ्त में जितने गरीब थे उनको राशन, वो राशन आज तक उनको मिल रहा है। फ्री में कोरोना दिया। जो जीवन का अधिकार होता है वो सबसे बड़ा अधिकार होता है, सो फ्री में। तो ये सारे काम जो हम लोगों ने किए, आयुष्मान भारत का जो कार्ड हम दे रहे हैं गरीबों को, 5 लाख का वो मुफ्त इलाज कर सकते हैं, ये सारे गरीबों के लिए। इसलिए आपका ये कहना ये एकदम गलत है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। तो हमको ये बताइए कि कौन सी आर्थिक व्यवस्था, हम तो पूरी प्रयास कर रहे हैं कि गरीबों और अमीरों में जो दूरी है उसको पाटें, और उसमें काफी कुछ हम सफल भी रहे हैं। आप लेटेस्ट आईएमएफ का रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उसमें बहुत कमी आई है। और जो उनका ही रिपोर्ट है कि जो बहुत गरीब, अत्यंत ही गरीब है, उनकी संख्या 1% से भी कम रह गई है। तो आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, वो एक रेटोरिक है जो कुछ लोग उसका सहारा लेते हैं। लेकिन मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आईएमएफ के रिपोर्ट्स और जो समय समय पे भारत सरकार के जो रिपोर्ट्स आते रहते हैं उसको आप ध्यान में देखें, और जो कदम, जो कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार ने उठाई हैं, जिसका लाभ जो समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसका लाभ जो उठा रहे हैं। आप हमको बताइए, जो सबसे संकट की घड़ी थी वो कोरोना की घड़ी थी, उसमें सरकार ने क्या किया? सरकार ने सबको, जितने गरीब थे उनको मुफ्त में राशन दिया, और उस समय कोई बिचौलिया नहीं होता था, वो सीधे उनके खातों में और सरकार के जो तंत्र थे उसके माध्यम से उनको मिलता था, उन तक पहुंचाया जाता था। तो ये सरकार ऐसी है जो सबसे गरीब से गरीब का ख्याल रखती है। लेकिन जो भी समाज में जो व्यक्ति हैं उनको बराबर का हक मिले, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहती है, और उसका नतीजा ये जो आंकड़े मैंने दिए उसके माध्यम से आपको पता चल सकता है। थैंक्स सर। देवेश जी, मैं यहाँ पर एक सब बच्चों को बताना चाहती हूँ जी। कि सब बच्चे कहते हैं ना, यदि ये जो गरीब जो होते हैं ना, यदि खुद मेहनत करेंगे, मेहनत नहीं करना चाहते। आप तो आप गरीब आप ऐसे हैं कि मेहनत नहीं करना चाहते, मुफ्त का खाना चाहते हैं। मैंने खुद इतना एक्सपीरियंस किया है।
आपको किसी भी गरीब को बोलो आके भाई घर में काम करो और यू विल गेट द मनी, वो काम नहीं करेंगे। नहीं, देखिए वो हमें कोरोना के सिखाना समय चाहिए कि मेहनत करो, मुझे किसी पार्टी से नहीं है, पर मेहनत जब करेगा आदमी तो वो हर कुछ ऊपर उठ सकता है। सही यदि बात है। आप कहते हैं बच्चों में स्कूल में हम लोग ड्राइवर अपॉइंट करना चाहते हैं, पियोन अपॉइंट करना चाहते हैं, एनी पोस्ट, बट दे आर नॉट स्किल्ड। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। घर में आपको कुक के लिए भी जॉब करेंगे तो मिलते ही नहीं है, यू डोंट सही गेट, बात, मिलते ही सही नहीं। बात। और ड्राइवर ढूंढो, ड्राइवर नहीं मिलते हैं स्किल्ड। तो हमें जब अपने यंग जो गरीब लोग हैं उनको कहते हैं स्किल्ड बना, उनको कहना चाहिए भाई ट्रेनिंग लो। इतना इसीलिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी शुरू किया कि हाँ जो हाँ, इतना सरकार अनस्किल्ड इतना हैं। करती है, पर हमें जनता को सिखाना है कि भाई काम करना सीखो, तुम्हें जॉब मिल सकते हैं, बहुत जॉब होते हैं। क्योंकि बच्चे चाहे मैं चेयरपर्सन में तो बहुत ढूंढती हूँ ना, तो जब मैं ढूंढने जाती हूँ ड्राइवर का, ड्राइवर नहीं मिलते, प्लम्बर है प्लम्बर नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से ट्रेन प्लम्बर मिलता है। तो ये सबका साथ सबका विकास, हमें ये छोड़ के हमें सब लोगों को गरीबों को सिखाना है, डू द ट्रेनिंग, ड्राइवर की ट्रेनिंग लो, प्लम्बर की ट्रेनिंग लो, यू लर्न। और अभी मैंने बड़ा एक्सपीरियंस करा, अभी मैंने 3-4 इंटरव्यूज किए है ना, तब से तो जी, देखिए आई एम वेरी, मैं सोच रही भारत का क्या होगा, यंग ब्लड एमबीए करके आए हैं, कहते हैं हम मैडम हम संडे को काम नहीं कर सकते। अरे भाई यंग हो, अभी 25-26 साल के हो, कहो कि जी, हम मैं रात दिन काम कर सकता हूँ, तो एकदम, आपको एकदम। कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कर सकता है। पहले ही शर्त लगा दी मुझे संडे को काम नहीं करना, मुझे मंडे को काम नहीं करना है, मुझे 9 बजे नहीं मुझे 8 बजे काम नहीं करना है, 9 बजे ही करना है, तो कौन तुमको रखेगा, नोबडी इज गोइंग टू कीप यू। तो हमारे बाकी यंगस्टर्स को, एक मैम, मैं भी इसमें एक आपने जो कहा उसमें जोड़ूंगा कि एक हमारे यहाँ एक मानसिकता है, और ये एक बहुत गलत मानसिकता है कि जब हम सरकारी नौकरियों में जाएंगे तभी मैं मानूंगा कि मुझे रोजगार मिला है। हाँ हाँ सरकार में अब रोजगार है नहीं, आपको रोजगार बाहर देखना है। और हाँ, इतने अपॉर्चुनिटी, इतने अवसर हैं। आपने कितने स्किल सारे, डेवलपमेंट की बात की, हुनर की बात की, सब हम्म, में हुनर है, उसका उपयोग सही करें तो सबको आराम से। और कई लोग हैं, आप देखिए, जो मुद्रा योजना है, स्टार्टअप्स हैं, हाँ महिलाएं उसका जो लाभ उठा रही हैं, और नए नए उद्यमी खड़े हो रहे हैं, और वो बिल्कुल, एक उद्यमी 10 आदमी को नौकरी दे रहा है। हाँ ये लोग सब परिश्रम करना जानते हैं। परिश्रम करना, जो परिश्रम करेगा मेहनत करेगा उसको ही जॉब मिलेगा। माय डियर चिल्ड्रन, जो भी है लिसन दिस, बिना हार्ड वर्क के जो हमारा फॉर्मूला ऑफ भाग है, यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मूला एट एनी स्टेज। जब तक वो नहीं आएगा कहीं जॉब नहीं मिलने वाला। और फिर सरकार की, सब लोग सरकार का कहने लगते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही। माय डियर, जितने भी सुने, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। बस मैं तो ये बोलना चाह रही थी, क्योंकि अभी मैंने 2-3 एक्सपीरियंस करे ना, तो मैं बच्चों जी, के साथ जी, शेयर करना चाह रही थी कि जी, आजकल के जो बच्चों का माइंडसेट होता जा रहा है ना, दैट इज नॉट करेक्ट। जी, जी, माइंडसेट अपना सबको ठीक करना होगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, यंग हो, ओल्ड हो। तो जी। देवेंद्र, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका। थैंक यू, जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे एकदम ये सोच आया, तो मैं ये बच्चों तक मैसेज पहुंचाना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, है थैंक यू। ना, ओके। Thank you, ma'am. Thank you, sir. With this question, we'll be ending the question answer session. Uh, Thank you, sir, for gracing us with your presence and sharing your थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। enlightening insights as well. थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर। Thank you so much. Thank you so much, sir. थैंक यू। आई कैन लीव नाउ। Yes, sir, if you want to, you can. थैंक यू, थैंक यू। Uh, Members, please recognize the presence of our charge takers. This is Jyoti Arora, ma'am. Um, yeah. So
I believe we should start the committee proceedings now. First of all, I would like all of you to switch on your cameras and rename yourselves to your portfolios, not your names, only your portfolios. First, I'll be taking the attendance, and then if anyone has a doubt in ROPs, I'll be explaining it to those to you in a short brief while. First of all, we'll have the attendance. So whenever we speak your name, kindly unmute yourself and mark yourself present. Uh, I hope you guys know there is no camera, uh, there's no concept of present and voting in the AIPPM. We only have present here. You can say, mark yourself present by saying present, upasthit, or anything you want. Without further delay, we're starting the attendance. A, Ra A Raja. A Raja. Seeing she is not here. Agatha Sangma. उपस्थित सांगमा ठीक है. अखिलेश यादव. प्रेजेंट. अमित शाह. जय श्री राम उपस्थित. अजीत सिंह. अरविंद केजरीवाल. प्रेजेंट. अनुप्रिया पटेल. अनुप्रिया पटेल. असाउद्दीन ओवैसी. उपस्थित चंद्राबाबू नायडू. चंद्राबाबू नायडू. दयानिधि मारान. जय हिंद उपस्थित है. दुष्यंत चौटाला. राम राम उपस्थित. फारूक अब्दुल्ला. उपस्थित. हेमंत सोरेन. राधे राधे उपस्थित. Was that Hemant Soren? Yeah. K. Chandrasekhar Rao. Present. Malika Arjun Kharge. Malika Arjun Kharge. Mamta Banerjee. Mamta Banerjee. प्रेजेंट. मायावती. प्रेजेंट. प्रेजेंट. महबूबा मुफ्ती. प्रेजेंट. महबूबा मुफ्ती. प्रेजेंट. नवीन पटनायक. हर महादेव प्रेजेंट. नीतीश कुमार. नीतीश कुमार. पशुपति कुमार पारस. उपस्थित. प्रज्वल रवाना. प्रज्वल रवाना. प्रेजेंट. राहुल गांधी. प्रेजेंट. राज ठाकरे. उपस्थित. राज ठाकरे. उपस्थित. राजनाथ सिंह. जय हिंद उपस्थित. रविंद्रनाथ कुमार. जय श्री कृष्ण उपस्थित. संजय राउत. प्रेजेंट. शरद पवार. प्रेजेंट. सीताराम येचुरी. उपस्थित. सुखविंदर सिंह बादल. सत श्री अकाल उपस्थित. You are present, Sukhvinder Singh Badal. You are. Tejasvi Yadav. जय श्री राम उपस्थित. YS Avinash Reddy. YS Avinash Reddy. प्रेजेंट. योगी आदित्यनाथ.
देश की सेवा में हाजिर। If there's someone whose portfolio I didn't take and your attendance wasn't marked, you may speak now. I'll repeat the absent uh, members not present. If anyone of those are present, please let us know. A Raja, A Raja, नहीं है. Anupriya Patel, Anupriya Patel, नहीं है. Chandrababu Naidu, Mr. Chandrababu Naidu, नहीं है. Mr. Mallikarjun Kharge, Mr. Mallikarjun Kharge, Mr. Nitish Kumar, Mr. Nitish Kumar, and I think everyone else is present. So we have 28 members present in the committee. So the quorum and the votes needed to pass a motion shall be 15. Just a minute, we'll start in just a minute. If anyone has a doubt in ROPs and how the committee works, please raise your hands. Can you explain cheat system कैसे होगा अभी या cheats are not there too? Yes, sir. I'll let you know. I'll speak on that. अगर और किसी को doubt हो, please raise your hands. I'll start in just a minute. Give me a minute, please. Yeah, I think we can start now. Pardon me, I have a bit of a cold, so I may take a break in between sometimes. Your deputy moderator and your raptor will take care of it. Yeah, Mr. Amit Shah. Yes, am I audible? Am I audible? Yes, sir, you are. My voice isn't echoing, right? No, it isn't. So, sir, can I join with another device for the microphone purposes? Sir, completely up to you. If you feel that your audio or your camera is not working with this device, you can join from another device. Okay, sir. Mr. Dayanidhi Maran. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. So I just wanted to ask if POI will be entertained in opening speech, public session, private session, or just in public session or opening speeches? We'll be having POIs in the opening speeches and the public sessions. There will be no POIs in the private session. I hope that clears your doubt. Yes, thank you. Yeah. Anyone else?
Seeing none, I'll proceed with explaining you about how the chit will work. First of all, there are no chits in the committee. So you will not be able to send chits, no POI chits. If you have some interesting information to share in the committee, you can message that to me through Zoom personal chat. Oh, can we send substantive sheets to you? No, you cannot. You will not be marked upon those. Okay. So any interesting fact that we send our submissions on, we won't be marked on it, right? Hello. So could you please repeat your question? So my question is that if we send an interesting fact as mentioned by the moderator, so we won't be marked on it, right? So try to mention whatever you want to in your speeches. If you can't, you can send it to us. That's okay. We'll see if you're going to mark you on that or not. Okay. Yes. Any other doubts that any of you have? I am Anupriya Patel, present. All right, ma'am. I will once again take the names of the members who have been marked as not present with us. And if you are present, please answer to your name. Is A. Raja present? A. Raja? All right. Chandrababu Naidu? Perfect. Mallikarjun Kharge? Mallikarjun Kharge? All right. Nitish Kumar? Okay. Thank you so much. We'll just wait for a minute and then we'll begin with the opening speeches. Yes. I'm so sorry. I hope that clears your doubts on the chit system. I had actually, are we marked on every information we share which we are not able to mention in the speech, or? Sir, we will not be marking upon any facts that you send us, but if it's important and if it's relevant to the committee, we'll share it with the committee, and you will get appropriate marks. Okay. Excuse me. Yes. The short breaks which are present there will be in the form of unmoderated caucus. I think there's a provision for a break for lunch. We have that, and we can have unmoderated caucuses if the committee votes upon that. Okay. I wanted to explain regarding the documentation process. We'll be having a common press release at the end of the committee on day 3. And we will have individual memorandums which you guys can send to us. I'll be sharing a mail ID on the WhatsApp group. You can send it to us on that, and let us know on the Zoom personal chat if you have sent a memorandum. If So could you explain what is expected in the memorandums, please? you are not audible, can you speak it a bit louder? Yeah, I was saying, could you explain a little on what is expected in the memorandums? Memorandums basically is a message you are sending across to your party. Like, for example, if you are Rahul Gandhi, you can send a message to the workers of Congress to
do certain things which may influence the committee in favor of you. We do not we expect you guys to only send appropriate memorandums. अगर आप ऐसे वैसे फालतू मेमोरेंडम भेजोगे उससे कमिटी में कोई फायदा होगा नहीं एंड you will not be marked appropriately for that as well. मतलब we expect you guys to send memorandums that affect the committee relevantly and not something कि हमने वहां पर दंगे करा दिए etc etc. Along with that, the memorandums will be posted on the WhatsApp group by the. If the memorandum is passed and marked by the executive board, we'll be posting. No, we'll be announcing the memorandum in the committee only, since it will affect the committee as well. Right. Yes, Mr. Naveen Patnaik, followed by Dayanidhi Mara. Yeah, yes, sir. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, you are. Can you Yes, you are. repeat once about So your voice was as breaking. I was disconnected? Sir, I need. Can you repeat once about the memorandums as I was disconnected? We'll be having individual memorandums which you guys can send us across the 3 days. Where do you guys know what a memorandum is? Do you No, want sir. an explanation upon that as well? No, sir. We don't. You know now what a memorandum is. You are not audible. Sir, I think it will be better if you'd explain. Okay, I'll explain it to you guys once. Memorandum is basically what a leader of a political party sends across to the workers of his party. Basically, you are announcing something. Memorandum is basically a document through which you announce something. You can send a memorandum to the workers of your party to do certain things you want, which may influence the committee. You can also send a joint memorandum with a co-member of the committee. Like for example, the members of India Alliance, a couple of parties can send a common memorandum saying that they have decided upon who will be the prime ministerial candidate. मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल है. डोंट मतलब ये सेम चीज भेजोगे तो of course will be interesting, but you basically are announcing something, or you are giving some work to the workers of your party or the youth wing of your party. Yes. If you guys want the format is same as the 2 EB chits. Just on the heading should be a memorandum. It should be a Word document, and it should be well framed within 50 to 60 words. Also, could you please explain again the chat system? Sir, there will be no chits in the committee. You will not be able to send chits to us. But if you have some interesting facts to share, which you were not able to in your POIs or your speech, you may send it to us via Zoom personal chat. If we find it interesting enough, we'll announce it to the committee. And that's all. There will be no cheat system. You will not be marked upon cheats. And another thing I would like to clarify is whenever someone wants to say anything, you need to raise your hands and follow proper parliamentary procedure. I hope and believe you guys know about the all the 4 points in the committee. If not, you may raise your hand and ask your question. Mr. Dayanidhi Maran, you may ask about your question. You mentioned about a WhatsApp group being made. I'm sorry, but I'm not adding it to one if it's specifically for AIPPM.
All right, ma'am, there's no problem. We'll share the official link with you, the official WhatsApp Yeah. group. Varya, please send the invite link in the Yeah, I'm Zoom. doing that. Yeah. अभी तक Thank you. don't worry, अभी तक I have not sent it. I'll send it अभी in just a few minutes. आप join भी कर लो, उसके बाद I'll send the mail link जिस पे आप भेज सकते हो. ठीक है. अगर किसी को कोई आरओपीज में या पॉइंट्स में डाउट ना हो तो आप यू कैन रेज योर हैंड अभी. वरना आई विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग स्पीकर्स फॉर द ओपनिंग स्पीचेस. Everyone is requested to switch on your cameras, please. I think it will be more interactive that way. And keep in mind, we have gotten instructions from the secretariat that keeping your camera on, not keeping your camera on may affect your marking as well. Yeah, Mr. Dayanidhi Meran, if you have a doubt, you may ask. Yeah, sorry. So, was there any lobbying session or unmoderated caucus being held previously to decide, public session topics and agendas, subtopics? I don't think there was a official lobbying session. If you guys did do something unofficially or personally, I have no idea upon that. But there was no previous lobbying session. I'll give you an EB mandated lobbying session after the opening speeches end to decide upon the more topics to find a consensus so that the committee does not, suffer. Okay, thank you. Yeah. Seeing no more doubts, I think, yeah, Mr. Asaruddin Avesi. The opening statements are compulsory for all speakers, right? Yes, sir. The opening statements are compulsory for all speakers and we'll be having 2 POIs after every speech. I have increased the number of POIs since we do not have chits in the committee, so that the members do not suffer. Yeah. Okay. Yeah. Okay. The official WhatsApp group invite link has been shared on the Zoom chat. The members who have not joined this group yet can join. And all of you must be aware that this group is strictly for the EB to dispatch any important information regarding the committee proceedings or during the proceedings. So just wanted to make you aware about that. Mamta Banerjee. Can we, is it the default time 90 seconds or can we increase it to? Sir, the default time will be 90 seconds since we have to proceed with the committee as well. I hope you understand. Can we increase to it? Yes, sir, आप public session में कर लेना या private session में कर लेना. That's up to you. The opening speeches will be 90 seconds only. But if we have majority, can we do that? How many of you want to increase the time from 90 seconds to 120 seconds? I am taking an informal voting. If you want to, please raise your hands. I think we have 1, 2, 3, 4, 5, 9 hands raised, 10 hands raised. Since the majority of people do not want the opening statements to be extended to 2 minutes, we'll be having 90 seconds only. I think let us start the committee proceedings. Welcome members to the All India Political Party Meet 2023. It's an honor to be chairing this committee. I will be taking on on the speakers for the opening statements. You may raise your hands and we'll be recognizing the same.
We'll be taking Mr. We'll be taking Mr. Chandrasekhar Rao, followed by Mr. Rajnath Singh, followed by Mr. Sanjay Raut, followed by Mr. Kejriwal, followed by Mamta Banerjee. जिन जिनको रिकॉग्नाइज कर लिया अपना हैंड लोअर डाउन कर लो. फॉलोड बाय संजय राउत, आपको कर लिया रिकॉग्नाइज. फॉलोड बाय मिस्टर नवीन पटनायक, फॉलोड बाय कुमारी मायावती, फॉलोड बाय फारूक अब्दुल्ला, फॉलोड बाय अखिलेश यादव, फॉलोड बाय अमित शाह, फॉलोड बाय राहुल गांधी, फॉलोड बाय राज ठाकरे, फॉलोड बाय ओवैसी, फॉलोड बाय येचुरी, फॉलोड बाय दयानिधि मरान. संजय राउत सर आपको रिकॉग्नाइज कर लिया, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड नाउ. फॉलोड बाय रविंद्रनाथ कुमार, फॉलोड बाय प्रज्वल रविंद्र, फॉलोड बाय अजीत सिंह, फॉलोड बाय शरद पवार, फॉलोड बाय अनुप्रिया पटेल, योगी जी, फॉलोड बाय वाई.एस. अविनाश रेड्डी. अगर कोई है जो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, यू नीड टू रेज योर हैंड्स नाउ, क्योंकि ओपनिंग स्पीचेस तो सबकी होगी, तो आप पहले करो लास्ट में करो, डजंट मैटर. अगाथा कोमल सांगमा, रविंद्रनाथ कुमार, यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड. आप अपना हैंड लोअर डाउन कर सकते हो. सेम विद अनुप्रिया पटेल एंड अजीत सिंह, फॉलोड बाय मुफ्ती. Varya, if you have noted down the list, please एक बार रिपीट, फॉलोड बाय दुष्यंत चौटाला. प्लीज एक बार रिपीट कर दो फॉर द बेनिफिट ऑफ द members as well. Yes, I'll do that. All right. I may not be taking the full names, but I'll just repeat the list very quickly. Chandrasekhar Rao, followed by Rajnath Singh, followed by Sanjay Raut, followed by Kejriwal, Mamta Banerjee, Naveen Patnaik, Kumari Mayawati, Farooq Abdullah, Akhilesh Yadav, Amit Shah, Rahul Gandhi, followed by Thakre, followed by Asaduddin Owaisi, then Sitaram Yechuri, Dayanidhi Maran, Ravindranath Kumar, Prajwal, followed by Ajit Singh, followed by Sharad Pawar, Anupriya Patel, Yogi Adityanath, Y.S. Avinash Reddy, followed by Agatha, followed by Mehbooba Mufti, and then Dushyant Chautala. Is everybody clear with the list? I didn't get Varya, send it on the group as well for once. Yeah, send it. There wasn't my portfolio in the list. Amit Shah. But I was अमित recognized. शाह आपको रिकॉग्नाइज किया था, इस लिस्ट में आपका नाम नहीं था क्या? सुनने में तो नहीं Sir, आया. आपका नाम है. You are after Akhilesh Yadav. Okay. Yes, आपका नाम लिया था. Yeah, Varya, please send it on the group. रेज करना है ना हैंड. Yes. रेज हैंड.
We'll be starting with Mr. K. Chandrasekhar Rao. Mr. K. Chandrasekhar Rao, you may start your speech now. Mr. Rao. Screen visible? Is my screen visible? Yeah, Vedant's screen is visible. All right. Mr. Rao, is he present in the committee? He is not in the committee. Okay. So we'll be taking the second speaker, Mr. Rajnath Singh, as the first speaker then. Am I audible? Yeah, you are. You may start. नमस्कार, मैं राजनाथ सिंह, भारत का रक्षा मंत्री, इस सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए यह कहना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के लिए नितांत आवश्यक हो गया है। विभिन्न धर्मों के लिए विभिन्न प्रकार के नियम जब बनते हैं, तब उस समय जो भी समाज, चाहे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, उसको जब दूसरे समाज की सुविधा नहीं प्राप्त होती, तब वो अपने आप को कमजोर समझता है। इसलिए देश के संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 44 को बनाया कि आगे चलकर ये देश में लागू हो। भाजपा से पहले किसी सरकार में दम नहीं था जो इस कानून को लाने का वादा भी कर पाए। इसी का पहला कदम 2019 में 3 तलाक को रद्द कर देना था। 2019 में देश में 63,000 से ज्यादा मुसलमान औरतों ने एफआईआर दर्ज कराई और बताया कि कैसे उन्हें तलाक दे दिया गया है और कोई निर्वाह निधि प्रदान नहीं की गई है। 2019 में ही इस समस्या का हल हुआ और देश में मुसलमान तलाक केसेस में 80% तक की घटौती हुई। पर जब एक औरत निकाह करके दूसरे घर में जाती है, तब उसे सदैव यह डर रहता है कि कब उसका पति कानूनन दूसरी शादी कर ले। वो भले ही ऐसा ना करे, पर वो डर उसके मन में हमेशा रहता है। जैसे 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्मों को बहुविवाह करने से मना कर दिया गया था, उसी तरीके से इस डर को मिटाने के लिए 2023 में यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे धर्मों को एक स्तर पर ले आएगा और ऐसे निष्कर्म होने से बचाएगा। देश की सरहद पर रक्षा करने वाला हर जवान भारतीय कहलाता है, तो ये देश का कानून भी भारतीय कानून होना चाहिए, ना कि किसी धर्म या संप्रदाय का कानून। अंत में 2 पंक्ति कहना चाहूंगा, इस मोड़ पर घबरा कर ना थम जाएं आप, जो बात नहीं है उसे अपनाएं आप। क्यों डरते नई राह पे चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, पीछे तो आए आप। धन्यवाद। Thank you, sir. Any points on the floor? Any points on the floor? We have 4 people. I'll be taking 2 points of information. We'll have Rahul Gandhi followed by Akhilesh Yadav. जी राजनाथ सिंह जी, मेरा आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है। आपने कहा कि भाजपा की सरकार ने ट्रिपल तलाक को बैन किया विद एन एक्ट, तो मेरा सवाल आपसे सिंपली ये है दैट अगर आप यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिविल कोड चाहते हैं, तो क्यों आपने सिर्फ एक धर्म के अबैंडनमेंट ऑफ वाइफ को क्रिमिनल ऑफेंस करवा दिया, एंड वेयरएज फॉर ऑल अदर फेथ्स विद इन आवर कंट्री इट इज ओनली अ सिविल ऑफेंस? आपने सारे धर्मों के लिए अबैंडनमेंट ऑफ वाइफ को क्रिमिनल ऑफेंस क्यों नहीं किया, या फिर उसे सिविल ऑफेंस क्यों नहीं किया फॉर इस्लाम? मैं आंसर या यू मे जी, जो ट्रिपल तलाक का लॉ था, उसमें जब भी तलाक हो जाता था, तब कोई भी मुसलमान औरत को निर्वाह निधि यानी एलुमनाई प्रदान नहीं की जाती थी, उसको छोड़ दिया जाता था। इसलिए ये एक दुष्कर्म के रूप में था, इसलिए हमने ट्रिपल तलाक को 2019 में बैन कराया और 63,000 मुसलमान औरतों ने एफआईआर दर्ज करवाया था इस लॉ के खिलाफ। और ये शायद छोटा नंबर है, असली नंबर इससे ज्यादा था। प्लीज टू फॉलो अप। Not granted. Yeah, Mr. Akhilesh Yadav. Yes, sir.
राजनाथ सिंह जी, आपने बोला कि देश का मतलब जैसे अटल जी ने बोला है कि हमारा देश का एक एक बंदा जिएगा तो भारत के लिए, पर आप ये बताइए कि वो लोग जिन लोगों के साथ अन्याय होता है और जब आप अंत में आकर सीधा वोटिंग के टाइम पर ऐसे बिल लागू कर देते हैं, तब तब आपको नहीं लगता कि लोगों के साथ अन्याय होगा और वो अपने देश के लिए ज्यादा मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे? उसी अन्याय को मिटाने के लिए हम लोग पूरी भाजपा सरकार यूसीसी लाना चाहती है। सिर्फ अन्याय महिलाओं पे अन्याय आदिकाल से चले आ रहा है, हर देश के हर संप्रदाय पे अन्याय चले आ रहा है, पर उस अन्याय को मिटाने के लिए यूसीसी का आना आवश्यक है। Lead to follow up? Not granted. I'll clarify for once and all. Leave to follow up will only be granted in case of a very controversial answer, and I didn't find anything controversial in the answers, anything controversial or not enough in the answers given by Mr. Rajnath Singh. We'll be moving forward with the next speaker. The next speaker is Mr. Sanjay Raut. Mr. Sanjay Raut. Mr. Sanjay Raut. Mr. Sanjay Raut is he present in the meeting? Varya, please check once. Also, Chandrasekhar Rao just joined the meeting. Yeah, we'll ask him as well. No, Sanjay Rao is not present in the meeting. Sanjay Raut is not present in the committee. Mr. Chandrasekhar Rao, sir, yours was the first speech and you were not present in the committee. You may start your speech now. Mr. Rao. Mr. Rao. Mr. Chandrasekhar Rao. Okay, no issues. Today, Sanjay Raut has joined back. Sanjay Raut is, yeah, I just saw that. Sanjay Raut, sir, your speech, sir, you may start. Yes, Chair. Sir, can I be the next speaker? I just have connected, so I'll be searching for my speech. All right, sir. Next speech is Mr. Kejriwal. Hello, can you hear Yes, me? sir. So Yes, I will be starting my speech now. Yeah. My dear fellow delegates, I'm here today to talk to you about Uniform Civil Code. The UCC is a proposal to have a single set of civil laws for all citizens of India, regardless of their religion or personal beliefs. Currently, different religions and personal laws govern different aspects of civil life, such as marriage, divorce, inheritance, and adoption. This system is outdated and discriminatory. It means that people of different religions are treated differently under the law. For example, a Muslim woman may have to wait for 4 months to remarry after divorce, while a Hindu woman does not. I know that some people are concerned that the UCC would infringe on their religious freedom. However, I want to assure you that this is not the case. The UCC would not interfere with anyone's right to practice their religion. It would simply ensure that everyone is subject to the same civil laws. I also want to clarify that UCC is not a new idea. It is enshrined in Article 44 of the Directive Principles of State Policy. This means that the duty of the government to implement a UCC is important. I believe that the time has come to implement UCC in India. It would be a major step towards building a more just and equitable society. I urge the government to take immediate steps to implement the UCC. Thank you. Sir, you're on mute.
I'm so sorry. And we'll have Mr. Mamta Banerjee followed by Mr. Sangma. So my question to you is, आपने अपनी स्पीच में कहा था कि पूरे ओवरऑल कंट्री में आप यूसीसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि एक तरीके से ताकि वुमेन एजुकेशन एंड ओवरऑल एजुकेशन लिटरेसी भी इम्प्रूव होती है एक तरीके से उसमें, और जेंडर जस्ट लॉज भी आते हैं. बट अगर हम स्टेट ऑफ केरला की बात करें, वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है 90% से अबव है. इंडिया में सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, एंड वुमेन की हालत भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी है बीइंग मुस्लिम्स कंपेयर टू बाकी स्टेट्स. तो पूरे कंट्री में यूसीसी इम्प्लीमेंट करना जेंडर जस्ट के लिए आपको नहीं लगता कि पैसा वेस्ट होगा? क्योंकि केरला जैसे स्टेट में जहाँ पर वुमेन की हालत अच्छी है, वैसी और स्टेट्स होंगे जहाँ पर वुमेन की हालत अच्छी है, तो आपको नहीं लगता वहाँ पर टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा? Yes, I do think so, but we can implement the uniform civil code in other states which require the importance of uniform civil code. Yeah. Okay, thank you. Sir, एक question to Mr. Banerjee, if you are open to a question from the executive board. Yes. Sir, आप और मिस्टर केजरीवाल सेम अलायंस के नहीं हैं? Shouldn't both of you have a common viewpoint on the uniform civil code? And if not, what are you doing? Can you repeat the question? Sir, आप और मिस्टर केजरीवाल, both of you are from the India Alliance. You claim to be united to fight the BJP. Then why are you questioning each other's stance if you are in Indian Alliance? बस हमारी पार्टी का स्टांस है अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसमें भी जो वो बस वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है, एंड केजरीवाल जी का स्टांस इज विद यूनिफॉर्म सिविल कोड. Members, please recognize the presence of Sumit sir. Thank you. Carry on. The next speaker we have, sorry, Mrs. Sangma, you may ask your question. सर, जनता कह रही है कि यूसीसी का समर्थन पार्टियां 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कर रही हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? I would like to say that the next coming elections would also be taken into consideration when talking about this situation. Right now, I do not have any information on this. Sorry. Okay, sir. The next speaker we have Mr. एक second. Sanjay Raut, आप you can you Yes, speak sir. now? Yes, sir. I will be starting now. Yeah. UCC, Uniform Civil Code, aiming for one law for everyone, regardless of the religion. India is known for its culture and religion. जब तक संस्कृति है तब तक आस है, बिना संस्कृति मानवता का विनाश है. But now this unique feature of India is at a risk. The UCC is ending the cultural factor of India. People would not be able to follow their religion's activity. For example, where Muslims have different laws for their marriage, divorce, etc., whereas Hindus have other beliefs and laws. But here today, BJP is combining these all laws to increase unity. But if the people would lose their right to follow their religion and cultural activities, there won't be unity, but just revolt. This would also lead to more inequality, as many religions enjoy some seats, but by UCC, who would ensure that there will be no inequality in India? India is a democratic country, so this UCC should only be implemented if the people wants to. Thank you. Thank you, sir. Any points on the floor? We'll have Amit Shah
followed by Yogi. Mr. Shah, you can ask the question. Yes. सर मेरा आपसे ये सवाल है कि एक प्रैक्टिस होती है मुस्लिम पर्सनल लॉ में जिसका नाम है निकाह हलाला, जिसमें एक वुमेन की डिग्निटी और वुमेन के फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो फिर मतलब इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि मतलब ये लॉ तो कुरान में भी नहीं लिखा है, फिर भी पर्सनल लॉ में किया जाता है ऐसे। तो इसको हटाने से कैसे मतलब डिस्ट्रॉय कैसे हो जाएगा उनका कल्चर, डिस्ट्रॉय पूरी तरीके से? उन्हें तो फिर भी फ्रीडम है अपना रिलीजन फॉलो करने की। May I reply, Chair? Yeah, you can. Yeah, I believe that there are some unique cultural activities that are done by different religions. और ये शायद बुरी भी हो सकती है और शायद अच्छी भी हो सकती है और आपको इसके पीछे का मतलब भी नहीं पता। हम ये जरूर कर सकते हैं कि ऐसे जो अनवांटेड लॉज है इन्हें हटा सकते हैं, बट इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी इज जस्ट डिस्ट्रॉइंग कल्चर एंड रिलेशंस। उनके इस करने एक्टिविटी के पीछे का कुछ मोटिव भी हो सकता है और इन सबको जान के हम कुछ पर्सनल लॉ हटा भी सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट देयर इज स्टिल अ मोटिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी। Sir, plea to follow up. Note granted. Next, we have Mr. Yogi. Yes, sir. In your speech, you mentioned that UCC would destroy the culture. And with that statement, is it safe to presume that you think that basic human rights are not of any value and some religious practice are over them? Also, to say many practices like triple talaq have been abolished in Muslim countries 80 to 90 years before us. Taking that into consideration, with your statement, is it safe to presume that you are in against of human rights? Point of personal privilege here. The question was not like he was not audible. So the question was not clear. सर वो बेसिकली ये बोल रहे थे कि आर यू अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, क्योंकि कुछ हाँ बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था, आर यू अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, क्योंकि यूसीसी से तो हाँ मुसलमानों का यूसीसी से तो मुसलमानों का वो हो रहा है, भला हो रहा है। So we like no one is against a human right. The major thing is कि ये कोई बात नहीं कि यूसीसी का सिर्फ मुसलमानों के लिए फायदा हो रहा है। बहुत सारी सीट्स रिजर्व्ड है बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स और इससे इनइक्वालिटी भी नहीं हो रही है इस कंट्री में। रिलीजन इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट थिंग, ह्यूमैनिटी वगैरह अभी भी है, बट जो अभी मेजर इफेक्ट हो रहा है यूसीसी को वो है रिलीजन के ऊपर। यूसीसी से शायद यूनिटी वगैरह बढ़ भी जाए, पर ये जो रिलीजन फैक्टर है ये तो मतलब कम ही हो जाएगा। तो मतलब अभी जितनी है ह्यूमैनिटी वगैरह वो ठीक से चल रही है, देयर इज नो इशू, बट यूसीसी के बाद रिलीजन के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, तो उसके लिए आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट ऑफ दिस। Please to follow up. Not granted. But I hope that I'm clear that I am not taking points of personal. Sorry, I am not taking due to follow-ups, because for the simple point, it will take our time, and we are already in a paucity of time. I will only take due to follow-up if there is, some basis upon that. ठीक है? Excuse me, Chair, point of personal privilege. Yes, sir. Chair, when is the lunch break? At what time? lunch break कब है? आपके पास शेड्यूल नहीं है क्या? एक सेकंड, I'll have to check. Just a minute. No, sir. And sir, Chair, please put the schedule in the chat box as I'm not having it. आप ग्रुप पे हो? Yes, WhatsApp ग्रुप पे हो? sir. Yes, sir.
हाँ, तो I'll send it on the WhatsApp group. Okay, sir. Thank you. I'll let you know after the next speech. The next speech we have is Mr. Mrs. Mamta Banerjee. Mamta Banerjee, ma'am. Shall I start now? Yeah, you can. सबसे पहले मैं ये कह के शुरू करना चाहूंगा कि जो मोदी जी की वाइफ एंड योगी जी की सिस्टर है, दोनों एक्सचेंज कर दी गई है मोदी और योगी जी के द्वारा, एंड वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, एक्सचेंज रूप में रह रही है। तो अगर वो उनको अपने बीवी और वाइफ को मेंटेनेंस राशन प्रोवाइड कर पा रहे, वो पूरे देश की औरतों को क्या करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है बहुत बार PIL फॉर इनएक्टिंग द शरीयत लॉ इन द केस ऑफ महर्षि अवधेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर पॉलीगैमी यूनिलैटरल तलाक वॉइड। एंड दूसरा, तीसरा, हम पॉलीगैमी के बारे में क्यों बात करते हैं, पॉलीएंड्री के बारे में क्यों नहीं बात करते कभी, जो प्रेवलेंट है कश्मीर से लेकर असम तक की ट्राइब्स में। तीसरा, चौथा, अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में देखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इज रिलेक्टेंट टू इंटरफेयर बिटवीन द पर्सनल लॉज ऑफ द कंट्री। इसलिए तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने 175 साल राज करा, क्योंकि वो हमारे पर्सनल लॉज में एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेयर नहीं करते थे। चौथा, पन्नालाल बंसीलाल वर्सेस आंध्र प्रदेश के केस में देखा गया था कि एकदम से यूसीसी इंप्लीमेंट करोगे तो दैट कैन बी द काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और हमारी ये सरकार बिल्कुल यही करने की कोशिश कर रही है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फरवरी 2000 में कमीशन सेटअप करा था, जो वो देखेगा आर्टिकल 25 की वर्किंग को। और उसके बाद जब रिपोर्ट आई, उन्होंने बिल्कुल भी डिटेल में स्टडी नहीं करा था, और जो वेंकटेचलाइज के चेयर थे, उसकी रिकमेंडेशन को आज तक उन्होंने कंसिडर नहीं करा है। तीसरा, शाहबानो केस में जो कहते हैं कि वो यूसीसी के अगेंस्ट है, शाहबानो केस में राजीव गांधी जी ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 निकाली, जो सेक्शन 3 के तहत मुस्लिम वुमेन को वो प्रोटेक्शन देता है। अब मैं प्लीज रैप अप। ओके, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी धर्म अनुसरण की परिभाषा ये है कि हिंदू अच्छा हिंदू हो, मुसलमान अच्छा मुसलमान हो, और एक दूसरे की धर्म का आदर करते हुए हम एक साथ चले। क्योंकि हाईवे पे गड्ढा होते तो हम गड्ढे को भरते, हाईवे को नया नहीं बनाते। Perfect, sir. Any points on the floor? Mr. Patnaik, your hand has been raised since the previous speech. आपको कोई पॉइंट है या आप नोट डाउन करना भूल गए थे? यस सर, पॉइंट है। हाँ, ठीक है सर। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, शायद से इन्होंने पहले बोला कि मोदी जी की बीवी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर यू कैन सेंड अस ऑन द Zoom पर्सनल चैट। ओरल पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, मेरा पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी है सर, मेरा पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। तो मैं पूछ लेता हूँ कि सर, इनकी स्पीच में इन्होंने कहा आपको रिकॉग्नाइज किया मैंने अभी, आपको अभी रिकॉग्नाइज कहाँ किया? सॉरी सर। या we'll be taking Naveen Patnaik and we'll be taking Naveen Patnaik and Akhilesh Yadav. Sir, can I ask my question now? Yeah, you can. So सर, इन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि यूसीसी के लागू होने से बीजेपी ये चाह रही है कि यूनिटी का डिसइंटीग्रेशन होगा। पर क्या यूसीसी का लागू करना डेमोक्रेसी के जो मेन प्रिंसिपल्स है उनको बढ़ावा नहीं देता? डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सबके पास यूनिफॉर्म राइट्स हो, बट और ऐसा तभी हो सकता है जब हम यूसीसी को लागू करेंगे। तो इसमें यूनिटी का कोई चीज नहीं है, यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी अगर यूसीसी लागू होगा। तो आपके क्या व्यूज हैं इस पे? क्वेश्चन क्या है, मतलब समझा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ सिंपल है कि आप क्या चाहते हो कि इंडिया डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करके हम इंडिया को एक मतलब रिलीजन बेस्ड कंट्री बना, जहाँ पे लॉ सारे रिलीजन बेस्ड हो। अब
देखो अगर यूसीसी आर्टिकल 25 को वायलेट करता है ठीक है, 371 को वायलेट करता है ठीक है, लेकिन जब एक ही आर्टिकल 44 4 आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा होगा तो कैसे होगा? मैं समझाता हूँ। आर्टिकल 25 और 371 तो आपको पता है कैसे वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 48 और 244 भी कर रहा है। आर्टिकल 48 इसलिए कर, आर्टिकल 48 रिलेट्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, और अगर यूसीसी के आने से ट्राइबल्स की लैंड उनसे छीनी जाएगी और वो लैंड जो जंगल होगा उसको काट दिया जाएगा फॉर द अर्बनाइजेशन ऑफ द कंट्री व्हिच हैज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑन द एनवायरनमेंट। तो आर्टिकल 48 भी इससे वायलेट हो रहा है। दूसरा आर्टिकल 244 which provides state autonomy to the tribal people, और उनके ही एडमिनिस्ट्रेशन और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा कुछ ट्राइबल्स का स्टेट ऑटोनॉमी से, वो भी वायलेट हो रहा है यूसीसी के आने से। तो 4 आर्टिकल्स वायलेट हो रहे हैं, तो आपको वो नहीं दिख रहा और आपको अभी भी डेमोक्रेसी की लगी है। conclude briefly answer it. This is my final answer. ठीक है, मिस्टर अखिलेश यादव। ओके सर, तो आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी सिविल कोड ला रही है वो हिंदू सिविल कोड है? क्योंकि हम लोग सिर्फ एक मुस्लिम फैक्टर पे फोकस कर रहे हैं, हम किसी ट्राइब पे जा ही नहीं रहे हैं, तो बाकी इंसिडेंट्स देख के क्या हम उसे हिंदू सिविल कोड कह सकते हैं? हिंदू सिविल मेरे हिसाब से हाँ, हम हिंदू सिविल कोड भी कह सकते हैं। जहाँ तक आपने बात करी है मुस्लिम्स और ट्राइबल्स की, जो आपको 1961 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 5.7% पाया गया था कि मुस्लिम औरतों ने कहा था कि उनके पति पॉलीगेमी फॉलो करते हैं, जबकि 5.8% हिंदूज ने तब हिंदू बीवियों ने कहा था कि उनके पति पॉलीगेमी फॉलो करते हैं। तब तो हिंदूज की ज्यादा पॉलीगैमी थी मुस्लिम से, एंड अब वो रिसेंट सर्वे हुआ है तो पता चला है कि 1.9% मुस्लिम औरतों ने कहा है कि उनके हस्बैंड वो पॉलीगैमी फॉलो करते हैं। तो ऐसे देखा गया कि जैसे जैसे एजुकेशन और इनकम लेवल्स बढ़ते हैं तो वैसे वैसे ही पॉलीगैमी धीरे धीरे फेड अवे होती जाती है। लेकिन बीजेपी तब भी इसको एक पॉलिटिक्स का मुद्दा बना के एक पूरा यूसीसी फॉर्मुलेट करना चाह रही है जो इस्लाम को हर तरीके से टारगेट कर रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि हाँ, ये हिंदू सिविल कोड है। The next speaker we have is Say one moment, please. Mamta Banerjee, I have a question to ask. आपने अपनी speech में 2 cases mention करे थे as precursors. One was Bansi versus Andhra Pradesh case, and दूसरा आपने Ahmedabad case mention किया था. Could you please repeat that? Ahmedabad Women Action Group versus Union of India. It was basically a case against unilateral talaq. तो कोर्ट हाँ ठीक है, thank you. perfect. नवीन पटनायक, your speech sir. यस सर। नियम संहिता एक समान हो, समता का सबको गुमान हो, हर मजहब का मान रहे पर पहला मजहब संविधान हो। मैं नवीन पटनायक इस सभा में उपस्थित सभी सज्जनों तथा स्पीकर महोदय को प्रणाम करता हूं। स्पीकर महोदय, भारत विश्व में सबसे बड़ा एकता का प्रतीक है, परंतु तब भी भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों को विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने के मुद्दों पर विभिन्न अधिकार जो कि संवैधानिक नहीं पर धर्म व्यवस्था के ऊपर देकर भारत में एकता का विघटन का कारण बना है। जो अधिकार मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन को उनके पर्सनल लॉ के अनुसार दिए गए हैं, वो हिंदू, जैन, बौद्ध तथा सिख समुदाय के लोगों को हिंदू कोड बिल के तहत नहीं दिए गए। यही कारण है कि भारत में यूसीसी का लागू होना अति आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 44 में साफ लिखा है कि भारत में यूसीसी का होना अनिवार्य है, परंतु तब भी केवल भारत में गोवा ही ऐसा राज्य है जहां यूसीसी कार्य में है। भारत में पहली बार यूसीसी का मुद्दा केंद्र में लाने का श्रेय अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को जाता है। उन्होंने सन 1937 में इसकी मांग की थी, जिनमें उन्होंने सभी धर्मों के लिए लैंगिक समानता लाने के उद्देश्य से यूसीसी की मांग की थी, परंतु आज यूसीसी लैंगिक समानता से धार्मिक समानता के रूप में ढल चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति एक पत्नी के होते हुए भी 4 शादियां कर सकता है। वही यह अधिकार मुस्लिम महिलाओं के पास नहीं है। इसलिए यूसीसी का लागू होना कानूनों का एक सामान्य सेट प्रदान करेगा, सभी महिलाओं को सशक्त बनाएगा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा और एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण में योगदान देगा, जो अपने सभी नागरिकों के अधिकारों को महत्व देगा और उनको समर्थन करेगा। परंतु विपक्ष यूसीसी का विरोध कर यह कहता है कि यूसीसी भारत में धार्मिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाएगा। ओके सर, जो कि निंदनीय है। बीजेडी यूसीसी के मामले में केंद्र का समर्थन जरूर करती है, परंतु वहीं केंद्र का विरोध भी करती है, क्योंकि उन्होंने यूसीसी के मुद्दे को 24 के चुनाव से पहले लाया तथा उसे एक देश भर का मुद्दा बनाकर राजनीति को और गर्म कर दिया। ठीक है।
Any points on the floor? Hemant Soren and Sitaram Yechury. We'll take Hemant Soren followed by Sitaram Yechury. Sir, I have raised my hand for a point of parliamentary inquiry. As Yeah. my name is not mentioned in the opening statement, so my turn. I would like to. आपका नाम नहीं है, आपको मैं लास्ट में ऐड कर दे रहा हूँ आफ्टर तेजस्वी यादव. After Tejasvi, yes, sir. Okay, sir. ठीक है. तो आप अपना हैंड लोअर डाउन कर सकते हो. विल टेक सीताराम येचुरी followed by Mamta Banerjee. Sitaram Yechury this side, point of inquiry. Point of information ना? Information, POI. POI. So नवीन पटनायक जी, मेरा आपसे एक सवाल है. आपके पार्टी के 2 नेता पर डाउरी टॉर्चर एलिगेशन लगा है और आप समानता की बात कर रहे हैं. तो ये दोगुली पॉलिसी मुझे थोड़ी समझा दीजिए भाई, मेरे लिए भी अच्छा होगा. सर, जो मेरे कार्यकर्ता करते हैं वो मेरी पार्टी पॉलिसीज को बदल नहीं सकते, पहली बात तो ये. और मैं दोगली राजनीति नहीं खेल रहा. जो मेरा सीधा पॉइंट है, मेरा सपोर्ट यूसी की तरफ है, पर मैं किसी भी तौर से ये नहीं सोच सकता कि यूसीसी यूनिटी को हमारी यूनिटी को घटाएगी. बस यही कहना चाहता हूँ. Leave to follow up चाहिए? नो सर, थैंक यू. सर, आपने बोला कि आपके कार्यकर्ता जो करते हैं वो उससे आप अपनी पार्टी पॉलिसी आप उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, उससे आप अपनी पार्टी पॉलिसी शेप नहीं कर सकते. Did you say that? Or was I wrong in hearing that? सर, मैं वही फिर से बता देता हूँ. जो मेरे नहीं सर, एग्जैक्ट सेम चीज रिपीट करो. आपने बोला था कि नहीं बोला था? यस सर, बोला. सर, are you not the supremo of your party? Are you not the president of your party? Isn't what workers say your responsibility? यस सर, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर मैं अगर ऐसा हुआ है तो मैं पूर्ण रूप से उसका विरोध भी करता हूँ. लेकिन बस मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता उनकी आइडियोलॉजी है, उनको भी मेरी पार्टी आइडियोलॉजी है उनसे सटीक रहना पड़ेगा. और अगर वो ऐसे नहीं करते हैं तो पार्टी उस पर बिल्कुल एक्शन करेगी. ठीक है सर. अमित शाह. Am I recognized for a POI? I was Did you raise your hand? Oh, sorry. Yeah. Mamta Banerjee. Yes, you I'm recognize really Mamta sorry. I'm Banerjee. really sorry. हाँ, I had a POI. Yeah. इन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि यूसीसी मतलब इनका मतलब यही था अपनी स्पीचेस से कि यूसीसी किसी भी तरीके से सेकुलरिज्म को अफेक्ट नहीं कर रहा और सबको इक्वल राइट्स दे रहा है. आपके एक विश्व जो आपके आइडियल्स है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, उनके ही एक विश्व हिंदू की परिषद के ही स्पीकर ने विनोद बंसल ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि इंडिया में मुसलमानों को उतने ही राइट्स मिलने चाहिए जितने पाकिस्तान को हिंदू में मिलते हैं. और उनके ट्वीट में भी यही था कि यूसीसी एक बिल्कुल सही मामला है, बिल्कुल सही चीज है ताकि उससे सेकुलरिज्म खत्म हो, इस्लाम खत्म हो और हिंदुइज्म फैले. और हैशटैग जय श्री राम लगाया था. तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप कह रहे हैं तो यूसीसी सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है तो? सर, पहली बात, जो आरएसएस के लोगों ने कहा है मैं उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि मैं इतना बीजेपी जैसा नहीं हूँ. मैं एक इंडिपेंडेंट पार्टी का चीफ हूँ, और लेकिन मैं आरएसएस को सपोर्ट इस पूर्ण रूप से नहीं करता, ना ही उनके आइडियल्स को मानता. ठीक है सर. Next is Mr. Chandrasekhar Rao. Yes, sir. Am I audible? Yeah, you need to switch on your camera. Sir, if I'm switching on my camera, I'm getting left from the meeting. Okay, you can start without switching on your camera. Thank you. Yeah, you can. Yeah.
Esteemed members, the issue of the Uniform Civil Code is not one to be taken lightly. It strikes at the core of our nation's identity and unity, and it is our duty to consider the consequences deeply. The proposed code, in its current form, risks exacerbating religious divisions and communal tensions, which could have far reaching and negative consequences for our societies. As leaders and representatives, it is our responsibility to prioritize well being and development of our people. Our nation faces pressing challenges such as poverty, healthcare, education, and economic development. These are issues that directly affect the lives of our citizens and require immediate attention. It is imperative that we focus on these matters rather than divert valuable resources and energy towards a divisive initiative like the Uniform Civil Code. The Bharat Rashtra Samiti stands firm in its commitment to preserving our country's cultural diversity and fostering an environment of inclusive coexistence. Our opposition to the proposed code is rooted in the belief that India's strength lies in its diversity, and we must protect and celebrate the unique identities of our traditions of all communities. In conclusion, I urge this legislative assembly to carefully consider the potential repercussions of implementing the Uniform Civil Code without comprehensive consultation and consensus building among all stakeholders. Let us prioritize the pressing issues that demand our attention and work together to build a harmonious and inclusive India. Thank you. Any points on the floor? A point of parliamentary inquiry. Yeah. चार्ट के लिए मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छूट गए वो कोई चार्ट मैं आपको करूँ या डिप्यूटी मॉडरेटर या स्क्राइब? मेरे को भेज दो सर. Okay. We'll take Raj Thackeray, followed by both of you have POIs only, no? Yeah. Yeah. We'll take Raj Thackeray, followed by Akhilesh, Amit Shah. Today, I'm sorry to interrupt. After we're done with the POIs on this speech, we will take a break and everybody will strictly be back by 3:55. Yeah. After the POIs, we'll be taking Yeah. a break. अभी 3:35 से 3:50 था. We'll be taking the break at 3:40 and we'll be back at 4. 20 मिनट का Yes. ब्रेक है. खाना वाना खाओ. अगर आपको लॉबिंग करनी है, you can lobby as well. वो आपके ऊपर है. Raj Thackeray, you can ask the question. Yeah. So my question to you is that in your speech, you very clearly mentioned about cultural diversity and the potential repercussions. Sir, would you please explain on the fact कि cultural diversity आप किन चीजों को कहते हैं? हलाला इद्दत जैसी practices look like cultural diversity to you? Sir, practices which are violative of human rights आप उनको diversity बोलते हैं तो फिर sir, would you please explain on that? And as well, sir, potential repercussions तो सही चीजों के भी हो सकते हैं ना. तो सती प्रथा का अंत हुआ, उसके भी repercussions थे. 3 तलाक बंद हुआ, उसके भी repercussions थे. So, sir, repercussions do not justify something about something being right or wrong. So, please comment on this. Yeah. देखिए, ये समझने की बात है कि सिर्फ जो ऐसे लॉज होते हैं, कुछ लॉज हैं ऐसे जिनको हटाना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देंगे. जो पर्सनल लॉज में जो खामियां हैं, हमें उन्हें हटाने पे फोकस करना चाहिए रादर देन इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लॉज हैं जो शरीयत से आए हैं या हमारे वेदों से आए हैं, जिनको बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है. Please to follow up. Not granted. Amit Shah. So am I audible? Yeah, you are. तो केसीआर जी, आपने अपने भाषण में साफ साफ बोला था कि यूसीसी इज अ डिवाइसिव इनिशिएटिव पुट फॉरवर्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी. तो आपको समानता में भी सांप्रदायिकता क्यों दिखती है? May I speak?
Yeah, you can. देखिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सीधा सीधा हमारा आर्टिकल 25 जो है राइट टू प्रोपगेट एंड प्रोफेस रिलीजन की धज्जियां उड़ा रहा है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हर एक धर्म के जो नियम है जो उनके पर्सनल लॉज से ड्राइव्ड है उनको हटा रहा है। और ये सही बात नहीं है। हमें हर धर्म का वो मायने रखना चाहिए और उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको अपहोल्ड करते हुए जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Sir, plea to follow up. Not granted. We'll be breaking for lunch now, and we'll be reassembling at 4. If you guys want, you can lobby, but I think everyone can break for lunch now. So can we remain in the meeting? Yes, all of please you, remain in all the of you meeting. need to remain in the meeting. Okay.
First, please join back and open your cameras. We'll be starting with the committee. Last speaker before the break was Naveen Patnaik, if I'm not wrong, right? No, the last speaker before the break was K. Chandrasekhar Rao. The next Okay. speaker now will be Mayawati. Mayawati, followed by Farooq Abdullah, followed by Akhilesh Yadav, followed by Amit Shah, followed by Gandhi. Okay. Yeah. Members, is everyone back? Please turn on your cameras. We need to start the committee. Since we have I would like to finish with the opening speeches today only. यार एक बार सब लोग कैमरा ऑन कर लो so that I know that you guys are back. उसके बाद आपको बंद करना हो तो आपकी मर्जी है. Point of parliamentary inquiry. Yes sir. अभी भी 2 compulsory POIs है ना in every speech? Yeah. Okay. Compulsory POIs. Yeah. I think enough time हो गया है. We will be starting with the committee again. Mrs. Mayawati. Yes, should I start? Should I start? Yeah, you can start. Okay. नमस्कार टू ऑल. मैं कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की हूँ. Our party is not against the UCC. However, we do not support the way BJP and its government are trying to execute in our country. The BJP government should focus its attention on problems such as poverty, unemployment, and lack of basic needs like education and health, and rise above politics of narrow selfishness and religious bias. If the BJP rises above it and has a positive attitude towards UCC, the BSP will endorse the issue. Else, we will oppose it. The UCC is mentioned in Article 44 of the Constitution. Nevertheless, there is no provision for enforcing it forcefully, for which awareness and general consent have been considered best. Whereas, resorting to politics of narrow self-interest is not in the country's interest. In a country like India, where people of different religions practice different kinds of customs, these things cannot be overlooked. If one law is applied to everyone in all matters, it will not weaken the country, but strengthen it. Thank you. Any points on the floor? इन तीनों के अलावा और कोई नहीं है क्या? The fact
there are no others. We'll take Raj Thackeray followed by Yogi. We'll take Raj Thackeray followed by Prajwal Revanna. Sure. So, as Kumari Mayawati mentioned in her speech about poverty, education, and health, and a couple of other things, ma'am, you were in power in Uttar Pradesh for a pretty long time, and still Uttar Pradesh is one of the poorest states in India. And also, talking of narrow self-interest, जो कि आप बाकी पार्टीज को ब्लेम करते हो, मैम आपने अपना ब्लैक मनी तो जंगल काट के पार्क बनवाने में लगा दिया, बट आज भी आपका प्रदेश जिसमें आपने इतने सालों तक राज्य करा था वो आज भी गरीबी है. सो वुड यू प्लीज लाइक टू कमेंट ऑन इट? So there were some problems, but as if we get elected again, we would हम इसको वापस से इसको ठीक करेंगे, and we would like to have a better leading. We would do a better lead. साथी का पार्क बनानी गलती थी, ये मान लिया? Sorry, could you repeat again? रहने दो. प्रज्वल रेवन्ना. जैसे कि कुमारी मायावती ने कहा है कि एक समान कानून है वो सब पूरी जनता पे लागू नहीं किया जाता, उन्हें ऐसा क्यों लगता है? इसका कोई कारण भी हो सकता है, क्या कारण है वो बता सकती है? मैंने अपनी स्पीच में बोला था कि इट इज यूसीसी इज अ गुड कॉन्सेप्ट, बट इसको इम्पोज नहीं करना चाहिए, इसको फोर्स नहीं करना चाहिए, इसको अवेयरनेस की तरह करना चाहिए. तो आप अवेयरनेस करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप बता सकते मैम ऐसे बीच में दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछते. एक बार आपने क्वेश्चन पूछ लिया और उन्होंने जवाब नहीं दिया तो आप अपने स्पीच में उनको डाइवर्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है. ठीक है. we'll have Mayawati, we'll have Farooq Abdullah. Yes, sir. Am I audible? Yeah, you are. नमस्कार, मैं फारूक अब्दुल्ला. आज हम बात करेंगे यूसीसी के मामले में. यूसीसी से इंडिया की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मेन एसेंस ही खत्म हो जाता है. गवर्नमेंट यूसीसी को लाकर बाकी सारे रिलीजन्स पर हिंदू कोड और हिंदू आइडियोलॉजी को इम्पोज करना चाहती है. जैसे अब तक डिफरेंट रिलीजियस कमिटीज के लिए 4 अलग अलग मैरिज लॉज थे, लेकिन यूसीसी के आने के बाद इन सबको एक सिंगल लॉ फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं कि यूसीसी से इंडिया का सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो सकता है. यूसीसी का मेन पॉइंट यूनिफॉर्मिटी लाना नहीं है, पर्सनल लॉस को अटैक करना है, जो कि मोस्टली मुस्लिम पर्सनल लॉस है. बहुत सी ऐसी मुस्लिम प्रैक्टिसेस हैं जो ट्राइबल्स भी फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन उनको यूसीसी से प्रोटेक्शन मिल रही है. लेकिन बीजेपी को तो आदत है उनके खिलाफ के लोगों को इग्नोर करना. लोग मर रहे हैं तो मरने दो, रो रहे हैं तो रोने दो, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे अभी मणिपुर वॉयलेंस के मुद्दे को बैकग्राउंड में छोड़ के इन्होंने G20 के इवेंट से लोगों को अपनी तरफ खींच लिया, या फिर जैसे इन्होंने 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ सारी प्रोटेस्ट को इग्नोर करा और सिर्फ अपनी चलाई. और जब इंडिया में इंडियन पेनल कोड के बाद भी क्रिमिनल लॉज अच्छे से यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, जैसे सीआरपीसी और आईपीसी जैसे क्रिमिनल लॉज इंडिया वाइड यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र की अल्कोहल कंजम्पशन एज अलग अलग है, या यूपी में बेल ग्रांट करने वाला सीआरपीसी सेक्शन 438 स्टेट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड है और अलग है, लेकिन फिर भी इंडिया इनके हिसाब से सही चली रहा है, तो सिविल लॉज को यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि देश की एकता का फूल कभी मुरझाने मत देना, देश की एकता का फूल कभी मुरझाने मत देना, किसी धर्म को चोट कभी पहुंचाने मत देना. जय हिंद. Points on the floor. Naveen, we'll take Naveen Patnaik, followed by Mr. Amit Shah. Sir, can I ask? Yeah, you may ask.
तो जैसे कि आपने अपनी स्पीच में बोला कि यूसीसी से बीजेपी सीधा मुस्लिम पर्सनल लॉज को ही टारगेट करती है, पर क्या ये सच में है? आप पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू सबके लॉज के अंदर हम जो यूसीसी एक अलग चेंज लाएगा, सबके लिए एक समान नागरिक एक लॉ होगा, पर फिर भी आपने ऐसा क्यों बोला कि सिर्फ ये मुसलमानों को ही टारगेट करेगा? अगर आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज होती तो आपको पता होता कि पुष्कर सिंह धामी ने एक ब्लूप्रिंट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारी मुस्लिम प्रैक्टिसेस को मेंशन किया था कि इनको एब्रोगेट किया जाएगा और इनको ये प्रैक्टिसेस इतनी गंदी लगती हैं, लेकिन ये हक ये ट्राइबल से नहीं छीनते हैं, जबकि ट्राइबल्स में भी पॉलीगैमी पॉलीआंड्री जैसी प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं। तो फिर क्या ये बिल्कुल सही है कहना कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉज को टारगेट कर रही है? अमित शाह। तो फारूक अब्दुल्ला जी, आपने बोला कि मणिपुर में दंगे हो रहे थे और हम यहाँ पर G20 करवा रहे थे, तो आप चाहते हैं कि हम G20 ना करवाते, आप चाहते हैं कि हम G20 में भारत का नाम ना होता विश्व स्तर पे, दिल्ली डिक्लेरेशन ना साइन होता, सारे देशों के बीच में फ्रेंडलीनेस और अलायनेस नहीं बढ़ती, आप नहीं चाहते ग्लोबल कोऑपरेशन, आप नहीं चाहते इंटरनेशनल पीस? मणिपुर में लोग मर रहे हैं और आप लोगों को इंडिया का नया नाम एडवर्टाइज करने से फुर्सत नहीं है। आप चाहे मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मणिपुर में करवाते ना G20, क्यों नहीं करवाया? जब देश की इतनी गंदी हालत थी तो G20 क्या पहला पहला सबसे मेन टॉपिक था एक्सप्लोर करने के लिए। जब देश में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनको सॉल्व करने के अलावा हम ये सब चीजें करवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्लीज टू फॉलो अप। ग्रांटेड। सर, तो फिर आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, G20 प्रेसिडेंसी जो भारत को मिली थी वो पहले से ही डिक्लेयर हो चुकी थी और नई क्वेश्चन दिल्ली क्या में है ये ये? समिट होना चाहिए था। तो फिर आपका ये कहना तो बिल्कुल ही बेबुनियादी है। और हमने मणिपुर के अंदर जैसी हिंसा शुरू हुई थी वैसी सीआरपीएफ की हमने असम राइफल्स की टुकड़ी को तैनात किया था। तो फिर आप तो ये कह ही नहीं सकते कि हमने कुछ नहीं करा वहां पर, और मैं अमित अभी शाह तक खुद गया था वहां पर। अभी तक चल रहे हैं ना दंगे, खत्म नहीं हुए। जो भी किया है वो असरदार नहीं था, तभी अभी तक चल रहे हैं। अगर पार्टी में ज्यादा दम होता तो वो रुकवा देती। ठीक है सर। Next up, we have Akhilesh Yadav. मैं स्टार्ट? Yeah, sir. You may start. वैसे तो बोला जाता है कि हमारा देश अहिंसा के रास्ते पे चल रहा है, पर अब क्या हुआ, किसी ने इस लॉ के लागू होने के बाद वाली हिंसा के बारे में सोचा ही नहीं। आई बिलीव दैट इफ दिस लॉ विल पास, द प्रोटेस्ट विल बी एट इट्स पीक many places. It will lead to shutdown of schools. It will impact mental health of students. It will also increase the amount of hatred towards the community among the students, especially who are in junior and middle school. There are some tribal community which are very sensitive towards their religion, and if this will pass, it will create violence. Like new organization in Nagaland has threatened to burn down the official headquarters of the 60 legislature. If the state assembly passes the bill in support of the UCC, tribal groups Jharkhand called for a protest outside Ranchi's Raj Bhavan against UCC. Even the Naxalite community in West Bengal are fighting for alienation of ST land to non-tribal people. And if we pass UCC, it will trigger violence among them. All Muslims in India are governed by Muslim Personal Law, Application Act 1937. All Indian Muslim Personal Laws Board opposed the UCC, claiming it will snatch away Muslim rights. इतना सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी चाहती है कि ये लॉ लागू होना चाहिए, और ये तो सोचने की बात है कि हर टाइम ऐसे बिल इलेक्शन से पहले ही क्यों? अगर ऐसा ही है तो इससे इस पार्टी की नीयत के बारे में पता चलता है। इन हरकतों की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिर्फ वोट पाने की साजिश है। अगर ये बिल लागू हुआ तो जगह जगह दंगे हो सकते हैं। जिन स्टेट में ये राज कर रहे होंगे उन स्टेट में तो जो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उन प्रोटेस्ट के पार्ट होंगे, उन्हें तो ये पूछेंगे भी नहीं और डरा कर चुप करवा देंगे। परंतु जिन स्टेट में कोई और पार्टी रूल करेगी उन स्टेट में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सब धर्म को एक समान मानते हैं। और अगर एक पार्टी उनके साथ अन्याय करेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी करेंगे। अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो बढ़ते दंगों की वजह से वो रिलीजन यूसीसी के समर्थन में होगा, वो उस पार्टी को नफरत, बीजेपी को वोट मिलेंगे और माइनॉरिटी को हिट। जगह जगह हिंसा होने से अच्छा तो ये है कि पर्सनल लॉस को अमेंड करें। Can you repeat the last line? Just a second, sir.
जगह जगह हिंसा होने से अच्छा तो है ये कि पर्सनल लॉस को अमेंड। Any points on the floor? Personal privilege. Point of personal privilege. Who is this? ममता बनर्जी। Yes, sir. इन्होंने जो स्पीकर ने अपनी स्पीच में एक एक्ट कोट करा था 1937 में, वो कौन सा एक्ट था, एक बार फिर से रिपीट करवा सकते हैं? सर कौन सा एक्ट था? 1937 का एक एक्ट था, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट। ओके। Points on the floor? पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकते हैं क्या? हाँ सर, आप मेरे को या वेदांत को या वर्या को वाया पर्सनल चैट ऑन जूम भेज सकते हो। ओके, we'll decide whether it is in order or not. हाँ, तो points on the floor. We'll take Rajnath Singh and we'll take Kumari Mayawati. Rajnath Singh, you can start. जी सर, आपने अपनी स्पीच में वायलेंस और राइट्स की बात करी। 2012 से लेकर 2017 तक जब आपकी सरकार थी, यूपी में सबसे ज्यादा राइट्स हुए। 2013 मुजफ्फरनगर राइट्स एक एग्जांपल है। और अगर यूसीसी आता है तो ऐसे राइट्स इजीली अवॉइड हो सकते हैं, क्योंकि इनमें एक जो राइट्स पे बेस्ड राइट्स होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है, और राइट्स हर एक धर्म को मिल रहे हैं। और आप तब भी उसको अपोज कर रहे हैं, जबकि आपने वो राइट्स का डिस्ट्रक्शन खुद देखा है। आपकी सरकार के टाइम पे वो सारे राइट्स हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका तो क्वेश्चन ये है कि दंगे हो रहे हैं तो यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन से मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्या मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास इन राइट्स को रोकने का कोई तरीका है? तो 2019 सर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप वापस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। मैं अभी कंटिन्यू कर। तो बीजेपी के पास क्या इसका सवाल है? क्योंकि जब सीएए भी हुआ था तब भी बहुत दंगे हुए थे, काफी जगह पे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। और फिर अगर हम बोलते हैं कि दंगे की वजह से कोई लॉ लागू नहीं होना चाहिए, तो इसका भी जवाब है कि अगर पार्टी ऐसा कोई लॉ बनाए जिससे जिसे खाली माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम ना हो, तो उसमें दिक्कत क्या है? तब राइट्स नहीं होंगे। ऐसा कोई लॉ जिससे हमारे देश की मतलब यूनिटी में असर पड़े, उस लॉ को क्यों बनाना है कि यूनिटी टूट जाए? तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लॉ बने जिससे हमारे देश की यूनिटी और स्ट्रांग हो। So please to follow up. सर, आपने अपनी स्पीच में मेंशन करा था कि ये बच्चों के मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा, बट अगर ये अंडर एज मैरिज और हलाला और पॉलीगैमी को, डोंट यू थिंक कि वो उनको डर लगता है बार बारी कि होना चाहिए? मैं आप कह रहे हैं कि जो दंगे हैं उनसे बच्चों को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि जब स्कूल बंद होंगे तब पर्टिकुलरली एक रिलीजन के ऊपर जब एक असर पड़ेगा तो लोगों को लगेगा कि ये रिलीजन गंदा है, और उनकी मेंटालिटी भी डिफरेंट हो जाएगी। और क्या आप इसके अगेंस्ट नहीं है जो आप कह रहे हैं मेरे से? ठीक है सर। नेक्स्ट अप वी हैव हाँ वेदांत। यस मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अखिलेश यादव से? और इज रेडी। टाइम की कमी है, कल अगर कल पूछ लेना। चलो, अभी ओके अभी अभी वी नीड टू प्रोसीड। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, नेक्स्ट अप वी हैव मिस्टर अमित शाह। सर, उससे पहले आप बता सकते हैं वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन ऑर्डर है या नहीं है? कौन सा पॉइंट जो आपने भेजा है अभी? मैसेज किया है, हाँ सर, वी आर फैक्ट चेकिंग दैट। आप ओके अपनी सर। स्पीच दे दो, आई विल अनाउंस वेदर इट इज इन ऑर्डर। ओके सर, विल यू अनाउंस द, अगर वो ऑर्डर में हुआ तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर था क्या, वो भी अनाउंस करोगे? पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर इन ऑर्डर होगा तो आई विल अनाउंस कि उन्होंने क्या गलत बोला था और उसमें क्या चेंज। ठीक है, मिस्टर शाह, यू कैन स्टार्ट विद योर स्पीच।
संजय राउत जी कहते हैं कि देयर इज नो इशू। मैं बताता हूं कि इशू क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ में ओनली द फादर इज कंसिडर्ड अ लीगल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड आफ्टर डिवोर्स। इन द सेम लॉ मुस्लिम मैन कैन प्रैक्टिस निकाह हलाला, पॉलीगैमी, तलाक हसन, अंडरएज मैरिज। मुस्लिम वुमेन आर एंटाइटल्ड टू हैव ओनली 1/3 of their parents' property and they don't have adoption rights. Such laws are discriminatory, derogatory and illogical. They violate Article 14, 15 which say about equality, and Article 21 right to life and personal liberty in the case of nikah halala. They violate reasonable restrictions under Article 25 which say about freedom of religion, doesn't give you the right to harm the fundamental rights of others by acts carried in the name under the name of religion. At the same time, a UCC will not violate Article 29 which protects rights of minorities, as it nowhere mentions the provision for personal laws in Article 29. Implementing a UCC will be in accordance to Article 51A subclause E, which gives Indians a fundamental duty to denounce practices derogatory to women, Article 44 DPSP and the Shah Bano judgment. मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं, जो डिफरेंट कोर्ट केसेस बोल रहे थे, उन सब कोर्ट केसेस के अंदर यूसीसी का कोई ऑपोजिशन नहीं है और आपको सिर्फ एक अर्ध सत्य दिखता है। और जैसा कि आपने अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप केस में बताया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके अंदर जस्टिस सहाई ने कहा था कि यूसीसी जरूरी है देश के लिए, और आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करते हैं, जबकि आपको रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है कि यूसीसी में होगा क्या। आपने कोई ड्राफ्ट नहीं देखा है, लेकिन आपने फिर भी बोला कि ट्राइबल्स के घर जला दिए जाएंगे क्योंकि पेड़ काट दिए जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और आपने आर्टिकल 25 का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं पढ़ा है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसके अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते आप जिससे दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को ठेस पहुंचे। इसी के चलते एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हुआ। राहुल गांधी जी बात करते हैं अबैंडनमेंट की बात करते हैं, पर मैं बात करना चाहता हूं कि अबैंडनमेंट जो है वो ट्रिपल तलाक के केस में नहीं था। ट्रिपल तलाक वाज द केस ऑफ डिवोर्स, एंड डिवोर्स जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है। अब अबैंडनमेंट मुझे कैसे पता चलेगा, सरकार को कैसे पता चलेगा कि अबैंडन किसी ने कर दिया है? अब वो तो इलीगल ही है। मतलब कोई एक चीज होती है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक चीज होती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अबैंडनमेंट हमें पता है गलत है, लेकिन सरकार को कैसे पता चलेगा कि ये किसी ने अबैंडन कर दिया है? मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, सरकार को कैसे पता चलेगा ये, है ना, जब तक रजिस्टर नहीं होगा। तो ट्रिपल तलाक में तो रजिस्टर होता था डिवोर्स, तो फिर हमने उससे इलीगल करा है। और मैं कहना चाहता हूं कि बीआरएम यस लास्ट में कहना चाहता हूं कि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि मैं अपने हमारे संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा अगर मैं देखूं कि इसका मिसयूज हो रहा है। ठीक है सर। राइट टू रिप्लाई। राइट टू रिप्लाई किसको चाहिए? क्या? राइट टू रिप्लाई किसको चाहिए? ममता बनर्जी। को राइट। सर आपको राइट टू रिप्लाई को चाहिए? सर मैंने पर्सनल अटैक तो नहीं करा कुछ, मैंने तो उनकी बस सर आप शांत हो ना सर। करे। सर आर यू द मॉडरेटर? सर बट मैं अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा था, सॉरी सर। यस सर। ममता बनर्जी, हाउ आर यू ऑफेंडेड? एक तो पहले इन्होंने कहा कि आपने कोर्ट केस कोर्ट करे जिसमें आपने आधी जजमेंट सुनाई, वो ठीक है, बट इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ पढ़ा तो है नहीं, इन्होंने कुछ भी हवा में बोल दिया कि पेड़ काटेंगे वो करेंगे। तो इन्होंने ये कैसे कह दिया हमने कुछ नहीं पढ़ा है और पेड़ काट दिए वो कर दिए। उन्होंने इसको एज अ सेंसलेस पॉइंट रेफर करा है। सर आप अपोलोजाइज करना चाहेंगे अमित शाह? सर मैंने उस स्टेटमेंट में मेंशन सर किया आप था। अपोलोजाइज करना चाहेंगे, हाँ या ना? आई डोंट वांट द क्लैरिफिकेशन। नो सर नहीं। ठीक है। फॉर फर्दर रेफरेंस राइट टू रिप्लाई ठीक है, अगर आप ऑफेंडेड हो यू कैन रेज, बट अमित शाह सर आप अगली बार जब तक आपको बोला ना जाए यू विल नॉट स्पीक इन बिटवीन। सॉरी सर। या द पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। Rahul Gandhi, we'll take Rahul Gandhi followed by Rahul Gandhi and we'll take Sitaram Yechuri. No, Sanjay Raut. We'll take Sanjay Raut instead of Sitaram Yechuri.
जी अमित शाह जी, मेरा आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है। आपने जैसे कि कहा था पहले आपके एक मेंबर ने कहा था दैट 370 हटा के आपने यूसीसी की पहल की है, तो क्या जब यूसीसी इम्प्लीमेंट आप करने का प्रयत्न करेंगे उससे पहले क्या आप आर्टिकल 371 विच प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द नागा कम्युनिटीज as well as the Meghalayan communities like the Khasi tribe etc. क्या आप उनके भी एक्स्ट्रा लॉज या जो कस्टमरी लॉज उनके प्रोटेक्ट हो रहे हैं, क्या आप आर्टिकल 371 भी स्क्रैप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से? देखिए, मैं इसके ऊपर जो नागा कम्युनिटीज में जैसा अखिलेश यादव जी ने मेंशन किया था कि 300 घर जलाने वाली स्टेटमेंट जैसे ही आई थी, मैंने उनके साथ एक अग्रीमेंट में आया था और मैंने उनके साथ एक डॉक्यूमेंट साइन किया था। आप उसे रीड कर सकती हैं, अगर रीड नहीं कर सकती तो मैं बता देता हूँ। उसके अंदर हम अग्री कर गए थे एक कॉमन पॉइंट पे कि ट्राइबल्स जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है उनके ऊपर लाइकली है कि यूसीसी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। संजय राउत, Point of parliamentary inquiry. point of parliamentary inquiry. Yes, sir. Good. Can we raise a point of order to the reply of the POI Rahul You Gandhi ने जो cannot पूछा था raise. उसके? You cannot raise a point on a point. हाँ? You cannot raise a point on a point. Okay. संजय राउत. Yes. अमित शाह जी, आपने सिर्फ अभी कहा कि यूसीसी जो है होना चाहिए इस कंट्री में इम्प्लीमेंट, ताकि जो लॉस है सारे मतलब इक्वल हो सके। पर मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको नहीं लगता कि इससे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा सीट्स पहले रिजर्व्ड है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, बट यूसीसी के बाद बहुत ज्यादा ही इनइक्वालिटी हो जाएगी। देखिए सर, मैं पूरी स्पीच में इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि यूसीसी से क्या इक्वालिटी आएगी, आप इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। मुझे पहले आप बताइए कि इनइक्वालिटी कैसे होगी, तब मैं मानूंगा इनइक्वालिटी होगी, वरना मैं तो नहीं मानता कि यूसीसी को से कोई इनइक्वालिटी हो सकती है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इक्वालिटी होएगी। Next speaker we have Rahul Gandhi. Yes, sir. 1 second. You may start. I'm sorry. हाँ, राहुल गांधी आपकी स्पीच है. जी, I'm starting. Just a second. Yeah. Just a second. Yeah. वेदांत टाइमर ऑन कर दो. I'll start in 3, 2, 1. Yes. When leaders like Dr. B.R. Ambedkar have said that UCC should remain purely voluntary, and despite BJP rule states themselves having variations and amendments in CRPC and IPC acts, the center is pushing for an overtly ambitious law that will do nothing more than erode the social fabric and diversity of our country. Justice B.S. Chauhan, leading the 21st Commission, said that a unified code is constitutionally unviable. There are several parts of the Northeast and in the tribal belts where even the IPC and the CRPC do not apply. How can we expect UCC to be applied in such areas? Moreover, 8 to 10 crore population of tribals lives in North, 12% of it lives in Northeast, and hence UCC would probably not probably, but for sure contravene the constitution in contradiction to Article 371. Similarly, the Supreme Court in TMA Pi Foundation versus State of Karnataka reiterated that the sense of secularism in India is recognition and preservation of diversity, and placing them together to form a whole united nation. Thus, a united India need not necessarily have uniformity. It is making diversity reconcile with various universal and indisputable arguments on human rights. The Chief Justice of India, UU Lalit, and Justice JB Pardiwala in September 22 refused to entertain a petition seeking seeking a UCC on the basis of how the Law Commission said that the UCC is undesirable and unnecessary at this point of time. Therefore, we wish to make it clear that we are not against UCC, but highly concerned about the ideologies that will be driving its formation. Yeah. Thank you. Any points from the floor? Point of inquiry.
say I would also like to take a question for Rahul Gandhi. Like not a question, I just like to clarify one thing. Sir, you mentioned in your speech the case of PMI versus state of Karnataka, if I'm correct, right? What's Yes. the whole? Could you please repeat that whole wording? Yes, just a second. I said that in TMA Pai Foundation versus State of Karnataka, the Supreme Court said that the essence of secularism in India is recognition and preservation of diversity. Basically, they have defined diversity in terms of different people, different languages, etc., and placing them together to form a whole united nation. That is the essence of secularism. Thus, on the basis of that, the 21st Law Commission report said that a united nation need not necessarily have uniformity. It is making diversity reconcile with certain universal and indisputable arguments on human rights. All right, sir, got it. Thank you so much. So you can proceed. All right, we'll take the point of information from a second, please. Point of inquiry. We'll take it from Raj Thakre, followed by Rajnath Singh. Am I audible? Yes, you are. Yeah, so Mr. Rahul Gandhi, having said about secularism and the ideology that drives UCC and, you know, the 21st Law Commission and the various different things which you've mentioned in your speech, I would like clarification on what, on your thoughts on like, आप कैसे ये बोल सकते हो कि सेक्युलरिज्म और यूसीसी की आइडियोलॉजी जबकि आपकी पार्टी की खुद की आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म है but your party ministers are very clearly on records for saying that the resources of this nation first belong to the Muslim and then to the Hindus. So how could you talk of secularism and ideology that drives UCC? I mean, your party has done nothing in favor of secularism for the past. If I may answer. Yeah, I got your point. Thank you for your question. My point and my answer would be very simple. I recognize the fact that there's a slight difference between equality and equity. We believe in the ideology of equity, and secularism basically means to preserve and to protect all kinds of religions in our country. Therefore, as Muslims are a minority within our country, hence to reach equity, which is equitable resources for all the citizens of our country. For that reason, first the resources belong, and definitely we need to improve the conditions of the Muslims as they are a minority. And then of course, because Muslims are already a majority, and moreover for the fact that the Hindu code bill obviously exists, it already exists. So the codification of Hindu bill has already happened, and we really need to codify the Muslims. And as for a fact, a lot of people have a lot of times said that Congress was against the banning of triple talaq. I would again like to clarify that we were never against banning triple talaq. We were against the fact that the BJP wanted to criminalize the offense only for Muslims, and it was being still a civil offense for all the other faiths. That's it. Plea to follow up. Not granted. And just a request, please stick to the time limits. Yes, please be brief in your answers. Okay. Okay, we'll take the question from Rajnath Singh now. Just a minute. We have received a chat on the chat. Agatha Kal Sama, ma'am, we are not accepting chits. Chits नहीं है committee में. तो आपके इस क्वेश्चन पे मार्क्स नहीं मिलेंगे आप. Rajnath Singh, may I ask you a question? जी, राहुल जी, I have a simple question. Why is Congress opposing UCC? और जो उपलब्धियां हिंदू धर्म की औरतों को हैं, अगर वो दूसरे धर्म की औरतों को मिलती हैं तो आपको उससे कोई दिक्कत या तकलीफ है? देखिए, हमें किसी भी औरत के प्रोटेक्शन से या किसी भी औरत की सेफ्टी से कोई भी दिक्कत नहीं है. हम उन्हीं के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, पहली बात. दूसरी बात ये कि हमें यूसीसी की इम्प्लीमेंटेशन से इसलिए दिक्कत है
क्योंकि फर्स्टली अभी तक कोई भी ड्राफ्ट टेबल नहीं किया गया है, तो हम इतने डार्क में हैं दैट आप क्या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और हम ये ही प्रिज्यूम करेंगे दैट जिस तरीके से आपके पार्टी के मेंबर्स और आपके सहयोगी आरएसएस और हिंदू राष्ट्र को इतनी तेजी से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम फिलहाल यही अज्यूम कर रहे हैं दैट आपका ड्राफ्ट भी सिर्फ एक हिंदू कोड बिल की तरह होगा रादर देन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबकी जनभागिता के साथ होगा। इसीलिए हम यूसीसी को इसीलिए हम आपके आइडियोलॉजीज या फिर सिर्फ हिंदू राष्ट्र ड्रिवन आइडियोलॉजी वाले यूसीसी के अगेंस्ट है, नॉट अगेंस्ट the fact that India will of course have a UCC in the forthcoming future, but it is totally unnecessary right now. Sir, please to follow up. Not granted. Next up, we have Raj Thakre. Yeah, 1 second please. Yeah. Alright, so I'll be starting. Okay. आज मैं राज ठाकरे यहाँ खड़ा हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए, एक समान नागरिक संहिता की जरूरत की। हमारा भारत विविधता से भरा हुआ है और यही हमारे देश की शान है, परंतु धार्मिक विविधता का अर्थ अत्याचार नहीं है। वर्षों से चले आए धार्मिक अत्याचारों को जड़ से समाप्त करने का एक ही उपाय है जो काफी समय पूर्व भारत के नेताओं ने संविधान के आर्टिकल 44 में दर्ज करा था, एक समान नागरिक संहिता का विचार। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए हमारे नेताओं ने यूसीसी को लागू करने का विचार भले ही त्याग दिया हो, पर अब समय आ गया है कि हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और अन्य नेताओं के सपनों को सत्य में परिवर्तित करें। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हर शाह बानो, सारला मुद्गल, जॉन हैमिल्टन केसेस के बाद ये याद दिलाया है कि भारत को यूसीसी की सख्त जरूरत है, पर तुष्टीकरण की राजनीति के पास कान कहाँ, अपने ही देशवासियों की गुहार ना सुन पाई है। यूसीसी सभी धर्मों को एक स्तर पे लाएगा और नारियों को समान अधिकार प्रदान करेगा। शाह बानो जैसी कई मासूम महिलाओं को न्याय मिलेगा, बहुविवाह, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई जाएगी। सभी महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार और तालाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार प्राप्त होगा। सभी विरोधी जो डाइवर्सिटी के नाम पर यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, उनसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अब डाइवर्सिटी कहते किसे है? इन अधार्मिक प्रथाओं को डाइवर्सिटी का नाम देना क्या आपको उचित लगता है? यूसीसी न केवल हमारे समाज को विकसित करेगा बल्कि हमें एकता की भावना से जोड़कर एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। आइए हम मिलकर काम करें और एक ऐसे यूसीसी का मार्ग प्रशस्त करें जो प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय और समानता के सिद्धांतों को कायम रखते हुए हमारे देश की विविधता, एकता और धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता हो। मैं भारत में यूसीसी के लागू होने से पूर्णतः सहमत हूँ। माझा महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Okay, we'll take the question from Prajwal Rivna, followed by Sharad Pawar. जैसे कि ठाकरे जी ने कहा है अपने स्पीच में कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे, तो अगर यूसीसी लागू किया जाता है तो इससे महिलाओं पर भी प्रभावित होगा, तो क्या वो इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहेंगी कि जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो? I would require a little more clarification about the question. मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने अपनी स्पीच में कहा है कि आप महिलाओं की सहायता और उनकी मदद करना चाहती है उनके बेहतर भविष्य के लिए, तो आपको नहीं लगता अगर यूसीसी लागू की जाती है तो इससे महिलाएं भी प्रभावित होंगी, तो आप इसके लिए क्या करना चाहेंगे जिससे उनका कल बेहतर हो सके? यूसीसी देश में लागू करने का मेन मोटिव ही यही है कि
हम एक्चुअल ट्रू women empowerment और secularism को promote करेंगे, because women empowerment is केवल चिल्लाने से women empowerment नहीं आती है. You have to be on the ground and do something to actually promote women empowerment. और UCC के लागू होने से जितनी भी derogatory practices हैं, violative of human rights would end. So this would very clearly mean that women empowerment होगा, और जब वो अपने निजी जीवन की समस्याओं को हल कर पाएंगी तभी वो आगे बढ़ेंगी. तो UCC is very important for women empowerment. My question to you, ki Sikhs communities have mentioned that they rather prefer their own religious sentiments and ways of life than what UCC will impose on them. And they comprise of 1.72% of India's population, which is about 20.8 million. तो क्या आप 2 करोड़ लोगों की बातें जो उनके सेंटिमेंट्स हैं उन्हें हर्ट करते हुए UCC इम्पोज तब भी करना चाहेंगे? First of all, Sikhs are a part of, when we talk of Hindus in the constitution, we also include Sikhs as a part of Hindu. तो जब 1950 to 1958 में हिंदू लॉ कोडिफाई कर रहा था, तो टेक्निकली सिक्स के लॉज भी कोडिफाई हो चुके हैं. So there wouldn't be much impact on the Sikhs as much as it would have an impact on Muslim women and women in general, and obviously secularism, which it would really promote. So 6 का इसमें already codification 50s में हो चुका है. So UCC is more for women and secularism rather than a particular part of the population. Mr. Thakre, are you done with your answer? Okay, all right. We'll now move on with Asaduddin Owaisi. Okay. मैं असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट ऑफ AIMIM आज आपके समक्ष यूसीसी के खिलाफ में बोलूंगा. मेरा मानना ये है कि यूसीसी इज नॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड बट हिंदू सिविल कोड, बिकॉज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू इंप्लीमेंट हिज ओन आइडियोलॉजीज. बट आई वांट टू टेल श्री नरेंद्र मोदी जी दैट इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक एंड कॉस्मोपॉलिटन कंट्री वेयर एट every 50 kilometers you find different food, different practices, different cultures, different languages, etc. हम भारत के मुसलमानों को उनके रिलीजियस कल्चर और प्रैक्टिसेस या फिर जो उनके कस्टम्स है उसका प्रोटेक्शन हमें आर्टिकल 29 के अंदर मिलता है, जो कि एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है, जो स्टेट करता है दैट एनी सेक्शन ऑफ द society residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. And secondly, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state's fund on grounds of religion, race, caste, language or any of them. The major practice that is being endangered under the implementation of UCC is the practice of polygamy would be abolished. हमारे प्यारे मोदी जी सनातन धर्म की तारीफें करते फिरते अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हैं, तो पीएम साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलीगैमी आपके सनातन धर्म में भी है. आई वुड लाइक टू कोट द एग्जांपल ऑफ लॉर्ड राम्स फादर राजा दशरथ. उनकी भी 350 बीवियां थी, which is mentioned in your own holy book Ayodhya Kand Ramayan written by Valmiki, out of which 3 were his favorite, Kaushalya, Kekai, and Sumitra. Your own Lord Krishna had numerous wives. If this is not the practice of polygamy in Sanatan Dharma or Hindu Dharma, then what is it? नारंगी रंग के कपड़े पहनकर नाचने में आपके रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, लेकिन वही जब आपके पार्टी के लोग प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती करते हैं तो उसके जवाब में आप जावेद का घर तोड़ देते हैं और अपनी बड़ी सफाई से स्टेटमेंट देते हैं सेक्युलरिज्म रन्स इन अ ब्लड. जहां हिंदू औरतों के लिए सक्सेशन एक्ट 2005 लागू किया गया, तो मुस्लिम बहनों के बुलाई बाई जैसे केस को नरेंद्र मोदी जी ने क्यों रखा है इनको खौफनाक केसेस को मौन? दीजिए जवाब, दीजिए. धन्यवाद सर. First of all, I just want to say, please stick to the time limits. Please stick to the time limits. 90 seconds. You were exceeding by 15-20 seconds. So please stick. Sir, right to reply. Sir, right to reply किस चीज का चाहिए? मैम जैसे यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं बट नॉट अबाउट देयर होली बुक्स. अगर कोई ये कह रहा है कि उनकी किताबों में ये सब लिखा है तो आई वुड नॉट से कि ये करेक्ट है. उसके पीछे की भी काफी इंफॉर्मेशन होती है, तो आपको ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप ये कहते हैं कि उनकी इतनी बीवियां थी तो उसकी भी कोई. सर तो are you okay, let's put it simply, you're offended by what he said? Yes. Okay, sir, would you like to apologize or not? No, I would not like to apologize.
मतलब मेरे को एक पॉइंट बोलना है. Nice, sir. We move on to the POIs, please. Points on the floor. Okay, we'll take the question from Naveen Patnaik, followed by Yogi Adityanath. Naveen Patnaik, please proceed with your question. So can I ask? Yeah, you Am I can. audible? Please go Yeah, ahead. you are. हाँ, तो जैसे इन्होंने सेक्युलरिज्म की बात करी, और सेक्युलरिज्म हमें क्या कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? वो आर्टिकल 25। इसमें हम कोई भी धर्म को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट कर सकते हैं। पर वहीं आर्टिकल 13 ये बात कहता है कि अगर कोई भी लॉ, चाहे वो व्यक्तिगत कानून ही क्यों ना हो, अगर वो फंडामेंटल राइट से को वायलेट करेगा तो उसे रद्द किया जाएगा। तो इस हिसाब से मुस्लिम पर आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। Sir, your voice is breaking. I'm not able to understand your question. सर आप वाया चैट भेज दो, ये मैं आपको वाया चैट मार्क कर दूंगा। आपके शायद कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हो रहे होंगे। हलाला और तलाक जैसे मुद्दों में आर्टिकल 15 जो ये कहता है कि किसी भी तरह की सर आप वाया चैट भेज दो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। का भेदभाव, वो भी लिंग, कास्ट और धर्म के। सर मैं ऑडिबल हूँ? मैं हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप वाया चैट भेज दो, मैं वैसे मार्क कर दूंगा आपको। ठीक है? यस सर। योगी जी। सर आपकी पार्टी और बहुत सारी पार्टीज ने बहुत बारी बीजेपी को फॉर अ हिंदू फेवरेट पार्टी ऐसे क्लेम किया कि हम हैं, बट सर इनफैक्ट जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑपोजिशन ने मिलके हिंदू लॉज को कोडिफाई कर दिया था। और आप जैसे की पार्टीज आज तक हम लोगों को और किसी रिलीजन के लॉज को कोडिफाई नहीं करने दे रहे, क्योंकि वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। सर इस चीज से रेफर करते हुए वुड दैट मीन दैट यू थिंक ह्यूमंस हिंदूज आर नॉट ह्यूमंस? सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में नवीन पटनायक जी की आवाज लैग हो रही थी, तो बीच में मिक्स होके आपका क्वेश्चन मेरे को ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था। जरूर। आपकी पार्टीज और बहुत सारी अलग अलग पार्टीज ने बहुत बारी बीजेपी को अक्यूज किया है फॉर बीइंग अ हिंदू फेवर्ड पार्टी, बट सर फैक्ट है कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑपोजिशन ने मिलके बहुत सारे हिंदू लॉज को पूरा कोडिफाई कर दिया था, एंड अब वही ऑपोजिशन की पार्टीज क्लेम करती है कि Muslims are also humans, Sikhs are and all those are humans. That's why we can't hurt their religious sentiments, we can't hurt their diversity, so we can't codify their laws. So does that mean you think that Hindus are not humans, and does that mean that you are like discriminatory against them? सर हमने ऐसा कभी नहीं बोला कि हम हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है, बट आप जब ऐसे काम कर रहे हैं, आप प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती कर रहे हैं, और वहीं जब जावेद जहां पर उनके आप लोग जो रिमार्क्स दे रहे हैं हमारे रिलीजन को, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप बदले में उनका घर तोड़ देंगे? ये आपकी इंसानियत तो नहीं दिखती मुझे। Please to follow. Not grand. I think the secretariat is here for the feedback session. Yes, moderator. We'll be taking the feedback session. So if all the EB members and the teachers in charges could please leave the meeting. Can we move into a breakout room since अभी शायद दोबारा भी join करनी होगी? You'll have to join again, but abhi breakout rooms are not opening right now. So if you could just leave the meeting, then I'll send a text on your group and then you all can join back. All right. Okay. Let me do that. Okay. Okay. All the teacher in charges and the executive board members to leave the meeting, please. Okay, perfect. Bharti ma'am. Okay. Could the recording please be stopped for the feedback of the secretariat?
Am I audible now? Can anyone please say? Yes, you are. Yeah, yeah. Okay. I think we are we have to end the committee now, but we are left with a few opening statements. We were only able to do till Mr. Ovesi, Mr. Yechuri, Dayanidhi Maran, Ravindranath Kumar, Prajwal, Ajit Singh, Sharad Pawar, Anupriya Patel, Yogi Ji, Y.S. Avinash Reddy, Agatha Sangma, Mufti, Chotala, तेजस्वी यादव, सुरेन, हेमंत सोरेन, ये सब रह गए हैं, तो इन सबको अब हम कल ले लेंगे बिफोर एंडिंग द सेशन. हेमंत सोरेन से पहले पशुपति कुमार और सुखविंदर सिंह बादल भी है. The updated list has been sent to you all on the group official group. हाँ, या सॉरी, या तो I will continue with this tomorrow, but before ending the session, I would like to give you guys a general feedback about how the committee is going. Yeah, I found the committee very monotonous. Everyone was talking about the same points, and only a certain delegates, only a few delegates, 4 or 5 or maximum 6 of them were participating actively, asking POIs and pitching in time to time. Most of the committee seemed silent for the whole day. कल पर से यार improve on this. बाकी you guys have done good research. The points you guys are raising are better than what I expected on day one. So kudos on that. But थोड़ा अपनी participation increase करो, and yeah, that's all. अगर आप लोगों को हमारे लिए कोई feedback है that we can improve on कल and परसों, please let us know. अपने hand raise करके you guys can let us know. We'll take that into consideration. And also yes sir. हाँ, कल हम मॉडकॉक की स्पीचेस रख सकते हैं 90 to 120 सेकंड्स या 90 सेकंड्स या 120 सेकंड्स मॉडकॉक की. सर मॉडकॉक की स्पीचेस का टाइम आपके ऊपर है, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट व्हाट आई सजेस्ट 120 सेकंड्स की मत रखो, बिकॉज फिर ज्यादा टॉपिक्स आप डिस्कस कर नहीं पाओगे, बिकॉज आपने देख लिया पहला दिन में अभी तक हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट भी खत्म नहीं हुई है. कल एटलीस्ट 30 minutes 45 minutes लगी जाएंगे वी टू कंप्लीट द ओपनिंग स्टेटमेंट्स ओनली. देन यू गाइस कैन कीप द मोड. आई विल सजेस्ट या तो 60 का रखो या 75 का रखो या 90 का रखो. इससे ज्यादा रखने का कोई फायदा नहीं है, मतलब आप लोगों के लिए नुकसान होगा. ओके ठीक है. एक सेकंड, आप लोगों ने हैंड रेस करें. आई टेक सब सजेशंस. वाई अविनाश रेड्डी. Yes, am I audible? या यू आर. सर जो मेरा एक पीओआई था जो कि नवीन पटनायक जी का था, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ. उनने अपना पीओआई चैट में दिया, तो मैं इसका आंसर आपका मैं इस यहाँ पे दोबारा तो सेंड कर नहीं पाऊंगा. जब मैं मीटिंग लीव कर दूंगा तो मैं इसका आंसर टाइप करके, मतलब कल जो मीटिंग में हम ज्वाइन करेंगे तब पे उसमें आपको मैं लिख दूं. यस सर, कल ही करना, आप आज मत करो. ठीक है. नवीन पटनायक, हैड यू सेंट द क्वेश्चन ऑन चैट बॉक्स? बिकॉज मेरे को मिला नहीं. आई थिंक बीच में मेरा कुछ इंटरनेट इश्यूज था. यस सर, मैंने लिख दिया. You have my number on WhatsApp. Can you send it to me there? Yes sir, I can. Yeah. Yes sir, sure. वाई अविनाश रेड्डी, आपका हैंड रेस्ड है, आपको कुछ पूछना है? हाँ, मैं जब अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली 30 सेकंड्स बाद वो मतलब लीव हो जा रहा है खुद से. अच्छा, तो फिर ट्राई करो. कल आप कोई दूसरे डिवाइस पे कर सकते हो क्या? मतलब इट विल बी बेटर इफ यू नो कैमरा ऑन करके आप बोले तो ज्यादा बेटर लगता है, ज्यादा इम्पैक्ट आता है. ठीक है, तो मैं दूसरे डिवाइस से ट्राई करूंगा.
You try that tomorrow. अगर नहीं हुआ तो you can always speak without turning on the camera if you. Okay. Yeah. Okay. Thank you. अखिलेश यादव. यस सर, सो मुझे ना एक राइट टू रिप्लाई के लिए आपसे पूछना है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट, अगर हम लोग इस कमेटी में सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के गॉड्स के बारे में बोल रहा है, तो लाइक इट शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि अगर ऐसे ही चला तो बिकॉज हमारा पॉइंट ही खत्म हो जाएगा Sir, सेक्युलरिज्म. sir, we will be taking appropriate action. अगर किसी ने कुछ ऐसा बोला है, जैसे right to reply, a delegate, a member can raise when he is offended, when he is personally offended. आपने raise कर दिया right to reply, we have taken that into notice. If we feel कि जो जैसे आपने शायद ओबीसी जी की स्पीच में किया था, if we feel that was demeaning enough, we'll cut his marks somewhere else, not in the speech. We have different sections of marking. In marking, we have different sections. We have discipline. We have party policy. We'll cut it somewhere if we feel the need. सर माय मेन पॉइंट इज दैट कि अगर हम लोग बात करें कि सबको इक्वल पार्ट मिलना चाहिए और हमारे देश में सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, तो हम लोगों को उस पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं बोलना चाहिए. हम लोगों को उसकी जो चीज गलत हो रही है उसके बारे में बोलना चाहिए. माय मेन पॉइंट इज दिस. Yeah, sir, I completely agree with you. We'll take appropriate action. Whatever the executive board members feel is necessary. Don't worry. No, we'll take care of this. Okay, so thank you. Yeah. Dayanidhi Maran. सर मुझे पूछा था कि जैसे लाइक अभी कमेटी एंड हो रही है, तो कल की जो पब्लिक या प्राइवेट सेशन होंगे तो उसके लिए कोई अनऑफिशियल या लाइक लॉबिंग सेशन हो सकता है, या तो लाइक क्योंकि अगर कल ही करेंगे तो थोड़ा सा लाइक डिले हो जाएगा स्पीचेस भी तैयार करने. What I'll suggest is अब तो we need to almost end the session. अभी तो आपका इसके बाद keynote address भी है. But for lobbying, you guys can कल आप थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट जल्दी ज्वाइन करके आप उसमें लॉबिंग कर सकते हो, या जब हमारे ओपनिंग स्पीचेस सारी खत्म हो जाएंगी, then you guys can lobby. I'll give you a session if you want. We'll have a voting upon that. We have received a message from Sharad Pawar that he will not be able to join the meeting tomorrow. Sir, I think you were well aware that the committee is going to go on for 3 days. अब आप कल join नहीं करेंगे, so how will you be able to give your opening speech? Pardon, ma'am. Sir, आपने इसमें मैसेज भेजा है कि you will not be able to join the committee tomorrow. Sir, I think when you were allotted this the particular portfolio, आपको बताया गया होगा that you have to be present for the all 3 days of the conference. कल आप Actually, I have another competition, national competition lined up tomorrow, so it will be very difficult for me to join at the same time both the things. So just a kind request if my opening statement speech could be today itself. सर मतलब I would have taken it अगर आप उससे पहले बता देते तो I would have taken your speech. We don't have any time left. That's why I will not be able to take your speech today. कल अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो आप शुरुआत में ज्वाइन कर लेना. आपकी स्पीच कल पहली स्पीच करा दूंगा मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. अगर आपने थोड़ा टाइम, जब मैं आपको रिकॉग्नाइज कर रहा था तब आप बता देते तो आपकी मैं पहली स्पीच ले लेता, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को. Okay, sir. I'll try my best to join at the. Try to join tomorrow at least for an hour or two. I'll try my best. Yes. Rahul Gandhi. Yes, sir. So I basically had a question. Sir Akhilesh Yadav, like he was constantly saying that mentioning other religions, gods or books is basically offending him and anything like that. And like from the beginning, when he raised the right to reply, it was for Owaisi's speech. And in that, Owaisi had just mentioned that Sanatan Dharma में भी polygamy practice होती थी. Dashrath की 350 बीवियां थी, which was mentioned in Ayodhya Kand of the Ramayana.
So, sir, just wanting to know that will just speaking about another religion be considered as offending to somebody, or like it is just his personal opinion? I think that was just his personal views. यार मतलब ऑन एन इनफॉर्मल नोट, अगर तुम लोगों ने ओबीसी की कोई भी स्पीचेस सुनी होंगी तो ही स्पीक्स लाइक दैट ओनली, ठीक है. I don't think that was offensive, but आपका पर्सनल ओपिनियन है. इफ यू फील दैट इज ऑफेंसिव तो अगर तो आप we can ask the member to apologize. If he is not apologizing, we cannot do anything more, I think. सर मेरे को इस चीज के लिए कुछ कहना है फिर से. सर सॉरी सर, अब टाइम नहीं है. प्लीज सर, सो जस्ट 1 minute. सर मैं समझ गया आपका क्या पॉइंट है, एंड आई एग्री विद यू. आप वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, यू कैन हैव दैट ओपिनियन, एंड विल लुक इनटू इट कि अगर कुछ कहीं पे हमें एक्शन लेना है तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. बट टू क्लैरिफाई ऑन राहुल गांधी's point, no, speaking on another religion is not offending as long as you do not, speak something that is of course offending. तो बट अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन करेक्टली नहीं है तो सर नहीं बोलना चाहिए, आई फील. क्योंकि हम जहाँ पर अभी जिस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, doesn't this place doesn't mean to demean someone, some gods or something, because अगर मैं अभी opposition में हूँ, I will oppose the thing that is going on, but not about the religion that कि इस कुरान में क्या लिखा है. I would not do that, I feel. Sir, I don't, मतलब I have taken your point into consideration. सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. No sir, please do not. Akhilesh Yadav and obviously I have taken both of your points in consideration. We'll look into it. We'll see. We'll decide what to take, if we have to take up action on that. But as long as you do not, outrightly offend anyone, I am okay with anything being speaking. As long as you are not offending, outrightly offending. Personally, I didn't find what Mr. Ovesi said that offending. Yes, it was a bit radical, but not that offending. That's the personal opinion of every delegate, and we as the EP members have the responsibility to take a neutral stand, and we'll look into it, and we'll take appropriate action. Mr. Dayanidhi Manan, if you have a question, you may ask, and then we'll end the session. Sorry, yeah. So kal just to confirm 11:30 like 11:30 के आसपास शुरू होगी कमेंट. According to your schedule, just a minute, I'll tell you. हाँ जी श्रेय, कल 11:30 we have to start the committee from 11:30 tomorrow. All right, and for like हम starting से like opening speech से continue करेंगे या कुछ और like procedure? We have done opening speeches till Mr. Ovesi today. We'll start tomorrow from I think we have Sitaram Yechuri there. Yeah, we'll start tomorrow's opening speech with Mr. Sitaram Yechuri, and we'll continue then. All right, thank you. Yeah. I think that's enough for today. All the best, and see you tomorrow. All your doubts for today have been answered. Members, please make sure to join timely tomorrow. We'll begin sharp at 11:30 tomorrow. Yeah. Sitaram Yechuri, yes. Hey, is there any meeting for 6:30 that we have to join? There is a keynote address from 5:30 to 6:30. I'm not sure what is happening there, but you can join there at 5:30. Oh,
Okay. We'll end this meeting right now. You guys can take a break for 10 minutes Sir, and then join that session. sir, can we join before the timing for lobbying tomorrow? What? Can we join before the timing for Tomorrow? Yeah. No. You can join at 11:30. I'll tell you what, I will start the committee. I'll be present at 11:30, but we'll start the opening speeches by 11:40. So you will get 10 minutes to lobby then and then. ठीक है? Okay. Is that enough? I think that's enough. Yes, sir. Thank you. You may leave now. Yeah. All right. Executive board members, please stay in the meeting. Members, you can exit the meeting. Ma'am, we can end the recording now, right? Yes.